This revision class will be taken by me, Simona Datta. And any doubts in between you have, you can write in the chat box. And at the end of each unit, I will take up your queries. Okay? So this is your syllabus. You all are well aware of that. We have consist of 5 units. The first unit is of introduction. The second unit consists of cross-border investment decision. The third unit talks about working capital management in multinational enterprises. Fourth unit talks about managing currency risk and interest rates risk. And the fifth unit talks about international diversification and portfolio investment. I think so. The screen is visible to all of you. If it is stopped working or my voice is not audible, kindly write in the chat box. Okay, so the first unit it talks about what is the globalization and the multinational enterprises. You all know that since the inception of 1991 LPG policy, that is liberalization, privatization, and globalization. आप ये जो globalization word है, ये जो point word है, ये कितना फेमस हुआ, कितना ये हर पॉइंट में कहीं हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की, इन एवरी पार्ट we can understand that there is a need of this globalization and the multinational enterprises. So in 1776, how Adam Smith has defined that what is globalization? Globalization is basically your integration of two or more economy. But what is multinational enterprises? If a foreign country can surplus us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage. In the previous semester, in semester 2, you have studied international business. वहां पर हमने competitive advantage theory पढ़ा था, जहां हमने ये बात किया था कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री के पास कोई भी प्रोडक्ट बनाने का चीप ये उनके पास ये इक्विपमेंट है कि वो उसको चीपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, then we should as a another country we should import it in our country instead of हम अपने कंट्री में उस चीज को बनाएं और ज्यादा कॉस्टिंग उसमें लगे. So the transformation of the world economy has dramatic implications for business. The international integration of markets also introduce global competition, making firms insecure even in their home markets. So obviously ये जो globalization है इसके pros and cons दोनों ही है. Yes, as I was talking about that globalization के pros and cons दोनों ही हैं. Pros भी है, cons भी है, advantage भी है, disadvantage है, both for the home country, for the host country. So we can see from the past 2 centuries, there is a transformation of world economy, and there has a dramatic implications in every sphere of the business, every sphere of the life. So we are only talking about how this globalization or multinational enterprises have impact on your international financial management. Financial management, you all know that what is financial management, how you manage your finances of the business ventures. ठीक है, कैसे आप investment decisions लेते हो, कैसे आप cash management करते हो, these kind of decision making, working capital कैसे होगा, finance related जो भी आपकी decision making है, that is coming under financial management. So as a international business, as a multinational enterprises, if I want to move from my home country territory to an another country, तो उस time पर मैं किस तरीके से अपने financial management करूंगी, and that is coming under this term point international financial management. So the international integration of markets also introduce global competition, making firms insecure even in their home countries. So cross-border transactions with, cross-border investments with, cross-border enterprises develop हुए, जिससे सिर्फ आप अपने कंट्री में कंपटीशन नहीं आ रहा है, आपको ग्लोबल कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है. जैसे I said in the previous thing that both it has a pros and cons. So what is MNC? It is a company engaged in producing and selling goods or services in more than one country. It ordinarily consists of parent company located in the home country and several foreign subsidiaries, typically with high degree of strategic integration among the units. So you all know that what is MNC कि अगर आप engaged है कुछ economic activities में of producing and selling goods and services in more than one countries, और आपकी subsidiaries दूसरे foreign countries में located है with high degree of strategic
integration, that is coming under the purview of your multinational corporations. Okay, yes. So while there is a reasons, what are the reasons, what are the forces for this rapid rise in multinational enterprises? So there are multiple reasons, multiple forces for this multinational enterprises rise. The first one is the fundamental political, cultural, technological, regulatory, and economic forces radically change the global competitive environment. So there is a drastic change in political environment, cultural environment, technological environment, and there is a change in the regulatory frameworks, in the laws, in the legal aspects of different countries. And also there are multiple economic forces, consist of your macroeconomic forces, microeconomic forces, macroeconomic forces like inflation, employment. So हर चीज का एक impact पड़ता है. जब आप national business कर रहे हो तो आपकी country के कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, रेगुलेटरी चीजों को देखना पड़ेगा. लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स को पता होना चाहिए, उसके एनवायरमेंट को पता होना चाहिए, आपके जितने भी सब्सिडीज हैं, हर एक सब्सिडीज जो डिफरेंट कंट्रीज में है, उनके पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, रेगुलेटरी चेंजेस जो आ रहे हैं, उससे अगर आपको कोई एडवांटेज हो रहा है, सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट रैपिड ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. Yeah. So second point is the massive deregulation. So जो deregulation हुआ इंडिया में भी 1991 में, जो LPG पॉलिसी आया जिससे the liberalization, privatization and globalization जैसे massive deregulation हुआ, ऐसे बहुत सारे countries में they have changed their policies and they have allowed your foreign direct investment, and as a result there is a rapid rise in multinational enterprises. Apart from that, the sale of state-owned firms around the world in massive privatizations designed to shrink the public sector. So state-owned firms around the world has उन्होंने सब ने जो state-owned, जो government-owned फर्म्स थे उन सब ने प्राइवेटाइजेशन किया, जिससे कि जो कैपिटल इनफ्लो हो वो हो कंट्री में, और इससे डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन एवरी स्फीयर डेवलपमेंट हो. So that is another reason that there is a rapid rise in multinational enterprises. Apart from that, the rise of market for corporate control with waves of takeovers, mergers, leveraged buyouts. So this is another point. ये जो कॉर्पोरेट मार्केट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये इतना इंसर्जेंट हो गया जिससे वी कैन टेक द स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस बाय टेक ओवर्स, mergers, leverage buyouts. So this is another reason. The swinging of status policies and their replacement by free market policies in developing nations. So पहले बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी रखती थी कंट्रीज, लेकिन पॉलिसीज चेंज हुए, डीरेगुलेशंस हुए एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज लाए गए इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो दैट इज अनदर रीजन. एंड द लास्ट रीजन फॉर दिस इज the unprecedented number of nations submitting themselves to exacting rigors and standards of global marketplace. So there are multiple standards, there are multiple you can say frameworks which the different developing countries, developed countries are following. So they are forming different territories so that they can have that global marketplace. They can reach every corners of the globe so that they can have the maximum advantage of that particular output. So that is some of the reasons and forces of rapid rise in multinational enterprises. I guess that is clear. Then moving to the next part, that is the process. The process of overseas expansion by multinational. So जब एक मल्टीनेशनल कंपनी कब बनती है, क्या वो पहले से यही सोचती है कि मुझे मल्टीनेशनल एंटरप्राइज बनना है? नहीं, कभी नहीं. हमेशा एक कंपनी नॉर्मल जैसे इनकॉर्पोरेट होता है इन इट्स डोमेस्टिक स्फीयर, वैसे ही इनकॉर्पोरेट होता है. देन देयर आर वेरियस सीरीज ऑफ अनप्लान्ड रिजल्ट्स जिससे कि वो अपने थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं कि अगर मैं ओवरसीज जाऊं तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और मुझे क्या थ्रेट हो सकता है. सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हुए दिस सीरीज ऑफ अनप्लान्ड रिजल्ट्स tends to this expansion of your company into multinational company.
Is my camera is not visible? Sandeep sir? Okay. Moving to the next point that we are said, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस का एक्सपेंशन की. बट वी हैव सजेस्टेड दैट कि ये एक स्टार्टिंग से ही हम ये नहीं करते हैं कि हमें एक multinational enterprise बनना. It is a series of unplanned results. So from a broader perspective, this globalization of firms is inevitable outcome of competitive strivings of members of oligopolistic industries. Each member strives both to create and exploit monopolistic product and factor advantages internationally, while simultaneously attempting to reduce the competitive threats posed by other industry members. So what we are saying that कि ये जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस है वो मल्टीनेशनल किस तरीके से बनते हैं कि वो try to identify their threats and opportunities. They try to exploit. If there is some monopolistic product, they try to expand that. So as a result, they take advantage of factor of production. So to meet these challenges, companies gradually increase their commitment to international business, developing strategies that are progressively more elaborated and sophisticated. The sequence normally involves exporting, setting up foreign sales subsidiary, securing licensing agreements, and eventually establishing foreign production. So ये जो sequence है किस तरीके से होता है? Starting में हम सोचते हैं कि suppose we are in India and we want to explore the global markets. So हम पहले export से try करते हैं कि exports करते हैं अपने products के किसी एक particular country में. Instead of setting up the factory directly there, let's try with the export. The export se process start hota hai. Then we try to set up our foreign sales subsidiary there. Then we try to secure licensing agreements and then set up a factory and then establish the foreign production. So this is a sequence in which usually the process of overseas expansion of multinationals. So this evolutionary approach to overseas expansion is a risk minimizing response to operating in a highly uncertain and foreign environment. Obviously, this is uncertain. You never know which point can trigger your sales, which point can trigger your break-even point. So everything you have to plan strategically in order to minimize the risk. So it is highly uncertain foreign environment. So for that, one of the important component is your financials. So you have to understand how you can manage your financials. And that is why we are studying this subject, right? So by internationalizing in a phase, a firm can gradually move from a relatively low risk, low return, export oriented strategy to a high risk, high return strategy, emphasizing the significant international deployment of assets and production capacity. जैसे कि in the sequence you have identified कि हम क्या process है हमारा export, then setting up a foreign sales subsidiary, then क्या है securing license agreements and then a foreign production. तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम start करें एक low risk, low return, export oriented strategy से कि अगर हमारी कुछ products default भी हो गए, खराब भी हो गए और उनको पसंद भी नहीं आया, तो भी at least we are at a low risk instead of compared to कि एक हम factory establish कर देते हैं, production कर रहे हैं वहां जाके foreign में जाकर we are investing crores and rupees and उसके बाद वहां पर कोई डिमांड ही नहीं आ रहा है. तो इसलिए हम in the internationalization process we are starting from a low risk, low return, export oriented strategy to a high risk, higher return strategy so that कि हमारी जो production capacity है उसको हम strategically implement कर सकें. ठीक है? I think so the process is clear to all of you. Moving to the next part, that is the environment of international financial management, okay, which is one of the important topic of unit 1. What are the environment? What we are saying when we are talking about international business के environment, तब हमारे पास cultural environment है, technological environment है, political environment है, लेकिन international financial management के environment क्या है?
So it is very dynamic, multifaceted, and has various factors including economic conditions, political stability, technological advancement, regulatory frameworks, cultural difference, and among nations. So the first is global economic conditions. So first of all, you should know कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, जिस कंट्री में आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं उस कंट्री या सब्सिडी पुट करने जा रहे हैं या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एनी वर्ड, वहां का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वहां के एक्सचेंज रेट, वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है. फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज दैट. इसके अलावा फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन. यू शुड नो what is the fluctuation in exchange rates, what are the interest rates in the global platforms, what are the inflation rates, what are the interest rates, how the economy is growing in your particular industry in which you are giving your products. So वो चीजें आपको पता होना चाहिए. तो first of all, to understand the environment of international financial management, the first environment is your global economic conditions. The next is political stability and regulatory environment. So the political stability and regulatory policies play a crucial role in shaping international financial markets. Obviously, because if you are putting a factory or you are investing in a particular country and वहाँ में बहुत ही political instability है, वहाँ पर wars होते हैं या फिर जो government है वो हर साल गिर जा रही है, चेंज हो जा रही है, और ट्रेड एग्रीमेंट्स में हर 6 months में चेंजेस आ रहे हैं. So obviously that will be an unstable political environment. So in that case, you should know wherever you are going, in whichever country you are going, or in whichever country you are putting your factory or subsidiaries, you should know what are the changes in the global policies, in the government policies, what are the changes in trade agreements, taxation laws, regulatory frameworks, so that is not impacting much on the cross-border financial transactions and investments. Okay? The third environment is your exchange rate volatility. Fluctuations in exchange rates can affect the profitability and risk exposure of multinational corporations engaged in international trade and investment activities. Managers need to effectively manage currency risk through hedging strategies and other risk management techniques. So there are fluctuations. International market की हम बात करते हैं वो बहुत volatile है, वो fluctuate होती रहती है. So आपको पता होना चाहिए कि आपका risk taking capacity कितना है, आपका risk exposure कितना है, आप कितने एंगेज हो सकते हो, किस एक्टिविटी में कितनी आपकी रिस्क कुशन है, दैट यू शुड नो. और आप जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस कंट्री में आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, यू शुड नो दैट हाउ यू आर मैनेजिंग दैट करेंसी रिस्क, how you if you can apply the arbitrage policy, if you can apply the hedging strategies and other risk management techniques, उसको आप किस तरीके से incorporate कर रहे हो to have the less impact of this risk exchange rate volatility. Okay. The fourth environment is your technological advancement. Obviously, this is a sphere of technological advancement. So technological innovations such as electronic trading platforms, algorithm trading, blockchain technology. So these are drastically has transformed the landscape of international financial markets. So it has made more efficient this cross-border transactions, cross-border investments. So you should know how to incorporate these financial technological advancements like blockchain technology, trading, and these kind of things. Okay. Then the fifth one is financial instruments and markets. So obviously international financial market के आपके fifth and most important point is your financial instruments, your international bond markets, your international equity markets, international derivatives market, commodity markets, foreign exchange markets. These 5 basic markets you should know. What are these? Foreign exchange markets, international bond markets, international equity markets, international derivatives markets, and commodity markets. इन पांचों markets के knowledge आपको होना चाहिए. इसकी in-depth knowledge अगर आपके पास है, so you can easily tackle the situations, you can easily mitigate the risk arising from these particular transactions. ठीक है? So understanding the characteristics and functioning of these markets is essential for effective international financial management. So you should understand each of these 5 markets, that is your foreign exchange markets, international bond markets, equity markets, derivative markets, and commodity markets. Then the sixth is your cultural and ethical consideration. Cultural and ethical consideration की अगर हम बात करें, so ethics is a very crucial subject nowadays, right?
क्लास में भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एथिक्स इज व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू प्रीच, व्हाट इज इन योर गुड फेथ, राइट? सो when we are doing in any part, if you are doing studies or in a international business or you are doing a job, in every sphere you should be ethically good, right? What it means कि आपके जो principles है वो सही होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, वहां पर हमें एथिकल कंसिडरेशंस, कल्चरल कंसिडरेशंस को मानना पड़ेगा। इफ वी आर गोइंग इन अ फॉरेन कंट्री, वहां के कल्चरल स्पीच वो क्या करते हैं, उनकी कल्चरल नॉइसेंस क्या है, वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है, किस चीज के लिए सेंसिटिव नहीं है, दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है? इफ समवन कमिंग इन आवर कंट्री एंड फॉर फॉरेनर्स एंड not keeping their slippers outside the temple, that is we can't accept that। ठीक है? कोई स्लीपर्स पहन के मंदिर में चला जाएगा, वो बिजनेस तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। सो दैट इज काइंड ऑफ कल्चरल थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। आपकी एथिकल कंसिडरेशन, कल्चरल कंसिडरेशन आपको पता होना चाहिए। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस कंट्री में आप सब्सिडीज पुट कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां की बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू देयर कल्चरल नॉइसेस, एथिकल कंसिडरेशन, दैट यू शुड नो। सो दैट इज कमिंग अंडर द environment of international financial management। Then we have risk management. So it involves identifying, assessing, managing various types of risk, including currency risk, interest rate risk, political risk, souvenir risk, liquidity risk, and many more. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे यूनिट्स आएंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड हाउ वी कैन मिटिगेट दैट, तब हम इसको इजिली ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि when we are talking about international financial market management, then you should know how to mitigate the risk and how to manage this risk, because that will obviously safeguard your financial health of the company and give you stability and in a diverse global environment। अगर फाइनेंस ही सही नहीं है तो आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे? सो फाइनेंस, आई गेस जब हमने 11th में कॉमर्स पढ़ा था तो ये टर्म पढ़ा था कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी कंपनी, राइट? सो अगर फाइनेंस ही नहीं है, मनी ही नहीं है, तो वो कितने दिन चल सकता है? वो सोल ही नहीं चल सकता। तो राइट, सो यू शुड नो हाउ टू मिटिगेट दिस करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, सोवेनियर रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। And the last point in this is globalization and market integration. You should continuously integrate different kind of strategies which can have a interconnectedness of global financial markets, and as a result, you can have a good opportunities in the international financial management. So this globalization trend presents both opportunities and challenges for international financial management as companies seek to expand their operations globally while navigating regulatory complexities and market uncertainties. So you should continuously update your knowledge in the global financial market so that you can take advantages of the opportunities and try to mitigate your challenges so that आप कोई market uncertainties को face ना करें, या फिर कोई face करे भी तो उस risk को आप mitigate कर सके, reduce कर सके। ठीक है? Yes, that this topic is clear to everyone. If you have any doubt, please write in the chat box. I will take all the doubts after completion of one unit. Now, moving to the next topic of unit 1, that is international financial environment is totally different from domestic financial environment. This we all agree that अगर आप अपने कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर एक अलग स्फीयर है, वहां के फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अलग तरीके से करते हो, वहां के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप अलग तरीके से लेते हो, वहां की स्ट्रेटजीज आप अलग तरीके से लेते हो, वहां के एनवायरमेंट्स आर डिफरेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट की बात करें, कल्चरल एनवायरमेंट की बात करें, दैट यू आर अवेयर ऑफ। ठीक है? सो ऑब्वियसली वहां पर सर्वाइव करना या वहां पर बिजनेस करना इज मच इजियर देन डूइंग अ बिजनेस इन अ मल्टीनेशनल स्फीयर, इन अ ग्लोबल स्फीयर। ठीक है? So in both the things, domestic financial environment हो या फिर financial environment हो, दोनों का ही जो difference है वो अलग है। So international financial management is subject to several external forces. कुछ external forces है जैसे foreign exchange market, जैसे आपके foreign exchange market, what is that? It is a market in which money denominated in one currency is bought and sold with money denominated in another country. जैसे आप
डॉलर को येन में चेंज कर रहे हो, दैट इज अ फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो इट इज द ओवर द काउंटर मार्केट, जिसको हम ओवर द काउंटर मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो सिंगल फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस और एन organized exchange with a central trade clearing mechanism where traders meet and exchange currencies. So यहाँ कोई central trading clearing mechanism नहीं है, ये एक ओवर द काउंटर मार्केट है, कोई एक सिंगल फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस नहीं है. It spans the globe with prices moving and currencies trading somewhere every hour of every business day. World's major trading starts each morning in Sydney and Tokyo and ends up in San Francisco and Los Angeles. So ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये वो मार्केट है जहां पर आप एक कंट्री की करेंसी को दूसरे को खरीदते हैं और दूसरे कंट्री की करेंसी को सेल करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ ओवर द काउंटर मार्केट. The foreign exchange market consists of two tiers. The first is interbank market and second जिसको हम wholesale market भी कहते हैं. And the second one is your retail market or client market. The first is your bank market, interbank market or wholesale market, and second is retail market or client market. The participants in wholesale markets are commercial banks, investment banks, corporations, and central banks, and brokers who trade on their own account. So हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी जो फर्स्ट टायर में है, दैट इज इंटर बैंक मार्केट और होलसेल मार्केट. तो उसमें कौन कौन है हमारे पार्टिसिपेंट्स? इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, सेंट्रल बैंक्स ऑफ ईच कंट्रीज, ब्रोकर्स हु ट्रेड ऑन देयर ओन अकाउंट एंड कमर्शियल बैंक्स. तो ये हमारे फर्स्ट टायर या फिर होलसेल मार्केट इंटर बैंक मार्केट में बोले. द सेकंड टायर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ योर retail market, which is comprised of your travelers, tourists who exchange one currency for another in the form of currency notes or travel checks. So suppose you want to go for a trip to USA, so आपको उसको डॉलर में चेंज करवाना पड़ेगा, right? So आप कैसे कराएंगे? एक लोकल एरिया में करोल बाग हो या साउथ एक्स में हो, कहीं पर भी आप एक फॉरेक्स ट्रेडर के पास जाएंगे, उससे आप अपने करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे. जो उस डेट का वैल्यू चल रहा है $1 इक्वल्स टू हाउ मच रुपीस, उसके अकॉर्डिंग आप उतने रुपीस देंगे और वो उतने आपको डॉलर्स देंगे. सो दिस इज कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ योर रिटेल मार्केट, दैट इज द सेकंड टायर. रिटेल मार्केट और क्लाइंट मार्केट. कि कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई टूरिस्ट है, उसको अपने करेंसी को एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज योर रिटेल मार्केट और क्लाइंट मार्केट. लेकिन अगर कोई सेंट्रल बैंक बल्क में करेंसी एक्सचेंज कर रहा है, या ब्रोकर्स हो, या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, या कमर्शियल बैंक्स हो, कॉर्पोरेशंस हो, these are coming on the purview of your interbank market. Right? So moving to the next slide. Second one is your currency convertibility. The foreign exchange market assumes that currencies of various countries are freely convertible into other currencies, but this assumption is not true because many countries restrict the residents and non-residents to convert the local currencies into foreign currencies, which makes international business more difficult. Many international businesses firms use counter trade practices to overcome the problems that arise due to currency convertibility restriction. So currency convertibility वो फिनोमेना है जहां पर आप इजीली फ्रीली अपने करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे कंट्री की करेंसी में. लेकिन कुछ कंट्रीज उसको रेस्ट्रिक्ट करती है फॉर देयर रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स. सो एज अ इंटरनेशनल बिजनेस यू शुड नो, क्योंकि ये जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी दिस इज कमिंग ऑन द पर्व्यू ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में मैं अपनी सब्सिडरी ओपन करने जा रहा हूँ या जिस कंट्री में मैं एक्सपेंशन करने जा रही हूँ, वहां की जो पॉलिसीज है वो क्या फेवरेबल है टुवर्ड्स करेंसी कन्वर्टेबिलिटी और नो. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट. Then we have your international monetary system. Any country needs to have its own monetary system and authority to maintain order in the system and facilitate trade and investment. So हर एक country के पास अपना ये ओन सिस्टम है कि वो अपने मॉनेटरी सिस्टम को किस तरीके से ऑर्डर करे, किस तरीके से मेंटेन कर रही है, किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. So India has its own monetary policy, you know that, and RBI, that is Reserve Bank of India, administers it. The same is with the case with the world. It needs a monetary system to promote trade and investment across the countries. So international monetary system exists since 1944. So हर एक country में उनके सेंट्रल बैंक, मेजॉरिटी सेंट्रल बैंक forms that
मॉनेटरी पॉलिसीज उस कंट्री में किस तरीके से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को फेलिसिटेट किया जा सकता है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, किस तरीके से रेपो रेट देखेंगे, किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, ये सब एक कंट्री के सेंट्रल बैंक करती है। वैसे ही अगर हम ग्लोबल स्फीयर में देखें, ग्लोबल वर्ल्ड में देखें, तो वहां पर भी ऐसे एक मॉनेटरी सिस्टम रखना बहुत जरूरी है और एग्जैक्टली एग्जिस्ट भी करता है सिंस 1944 and that international monetary system is that your international monetary fund and world bank who are maintaining the international monetary system and general economic development respectively. I guess that is clear. Then moving to the next part, that is international financial market, born in the mid-50s and gradually grown in size and scope. International financial markets comprises of international banks, euro currency market, euro bond market, and international stock market. In the class also, I have explained you what is euro currency market, euro bond market. ये जो euro word है, सिर्फ euro को denote नहीं करता है. ये क्या होता है euro currency market, euro bond market, you know very well. आगे भी हम करेंगे euro dollar, euro market, तब आपको और अच्छे से clear हो जाएगा. ठीक है? So international banks play a crucial role in financing international business by acting as both commercial banks and investment banks. So international banks has a major role in this investment, in this trading, international trading. So वो एक commercial bank की तरह भी काम करती है और एक investment bank की तरह भी काम करती है. ठीक है? So most international banking is undertaken through reciprocal correspondent relationship between banks located in different countries. But nowadays, large banks have internationalized their operations. They have their own overseas operations so as to improve their ability to compete internationally. So international banks भी crucial role play करते हैं. कैसे? पहले क्या होता था कि पहले दूसरे जैसे suppose here is a X bank is there in country Japan and Y bank is there in country Australia. ठीक है? So पहले क्या करते हैं X and Y एक agreement create कर लेते थे कि हम currency convertibility किस तरीके से करेंगे. अगर वहां पर डिमांड है तो हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर डिमांड है हम आप कैसे सप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से अग्रीमेंट करते थे. बट नाउअडेज क्या हो गया है कि हमने जैसे एग्जांपल में देखा कि कंट्री X in Japan now have their own subsidiaries in country Y, that is Australia. So इस तरीके से कंट्रीज ने ही अपने इंटरनेशनलाइज ऑपरेशंस कर लिए ताकि वो इंटरनेशनली भी compete कर सके. Then we have euro currency market, which is originally known as euro dollar market, which helps to deposit surplus cash efficiently and conveniently, and it helps to raise short-term bank loans to finance corporate working capital needs, including imports and exports. So euro dollar market हमने देखा था क्या था कि जब A, B और C तीन countries है, A is India, B is Japan, and C is Australia. So A, instead of depositing Indian rupees to B country, it is depositing suppose dollars to B country. एक another currency अपनी home currency को ना deposit करके दूसरे country में दूसरे country की currencies को deposit करिए तीसरी country में, that is coming the purview of euro dollar market. ठीक है? So euro bond market helps to MNCs to raise long term debt by issuing bonds. So euro bond market क्या करती है, MNCs को help करती है कि long term debt raise करने में. International bonds are typically classified as either foreign bonds and euro bonds. A foreign bonds is issued by a borrower foreign to the country where the bond is placed. तो euro bonds क्या है, दो प्रकार के होते हैं. पहला प्रकार क्या है, जहां पर एक foreign bond issue किया जाता है. Foreign bond कौन issue करता है, by a borrower foreign country to जहां एग्जाम्पल लेते हैं A, B और C है. ठीक है? Foreign bond is issued by a borrower foreign to the country where the bond is placed. So मतलब A country issue कर रही है किस country के bonds, C country के bonds. So that is a foreign bonds. और अगर वो अपने country के bonds issue कर रही है, that is coming under their own country's bond. ठीक है? On the other hand, euro bonds are sold in countries other than the country represented by the currency denominated by them. Now the next point is balance of payments. Another critical point in your international financial market management is your balance of payments. So international trade and other international transactions result in flow of funds between countries. Yes,
international trade and other international transactions result in a flow of funds between countries. So BOP क्या होता है, ये आप सबको पता है. It's a systematic statement और systematic account जहां पर सारे जो समराइज ट्रांजैक्शन से, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से इकोनॉमी को, उसको हम समराइज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुए उसको हम समराइज करते हैं in a statement which is known as your BOP. So the balance of payments of a country is a systematic record of all transactions between the residents of a country and the rest of the world. The balance of payments include both visible and invisible transactions. इसमें आपके current account आते हैं, capital account आते हैं, and financial account आते हैं. All receipts on account of goods exported, services rendered, and capital receipts by residents, and payments made by them on account of goods imported and services received from capital transfer to non-residents or foreigners. So thus, the transaction includes the exports and imports by individuals, firms, and government agencies of goods and services, inflows, income flows, capital flows, and gifts, and similar one-sided. So what is BOP? You all know very well. That is a statement जहां पर आपकी country से कितना monetary transaction हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना इन्वेस्टमेंट गया है, कितना ट्रेड आपने किया है, कितना एक्सपोर्ट आपने किया है, कितना इंपोर्ट हुआ है. इसका एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है जो कि डिवाइडेड है आपकी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स. ठीक है. Now coming to the next topic, that is your complexities and issues in financial decision making. क्या है, अगर हम एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो जब वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है आपकी करेंसी रिलेटेड. ठीक है. तो करेंसी का जो रिस्क है कि कन्वर्टेबिलिटी रिस्क हो गया, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो गया, उसको आप किस तरीके से आप मिटिगेट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए. So multinational enterprises are exposed to currency risk due to fluctuations in current exchange rates, which can impact the value of their assets, liabilities, revenues, and expenses denominated in foreign currencies. Suppose एक hypothetical example लेते हैं. You are company B and I am company A. ठीक है. मुझे आपसे raw material लेना है. You are in Japan and I am in India. मुझे आपसे रॉ मटेरियल लेना है ताकि मैं फिनिश गुड्स बना सकूं, और आपको ये रॉ मटेरियल बनाने में 3 मंथ्स लगेगा. तो अगर मैं अभी डील करती हूँ कि ये 1 yen, हाइपोथेटिकली 1 yen इक्वल्स टू 50 रुपीज. ठीक है. तो ये डील आपसे 3 महीने बाद मेरे पास एक्चुअल गुड्स आएगा, तो क्या मैं कौन से रेट पर ये डील फाइनलाइज करूंगी, आप और मैं? 1 yen equals to 50 रुपीज, या फिर आज से 3 महीने बाद जब रॉ मटेरियल्स बन जाएगा, जब आप मुझे उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जब मैं उसको इंपोर्ट करूंगी, तब जाकर मैं उस टाइम पर जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी रेट है, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगी. कौन सा मैं करूंगी? सो फॉर दैट वी यूज द हेजिंग स्ट्रेटजीज. ठीक है. वी यूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वी यूज ऑप्शंस, वी यूज नेचुरल हेजिंग टेक्निक्स, वो सब करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क है कि जब हम एक अग्रीमेंट कर रहे हैं और वो जब कुछ डिलीवर हो रहा है, उसके बीच के टाइम फ्रेम में आपकी करेंसी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं. सो उसको आप किस तरीके से मिटिगेट कर रहे हो, वो आपको आना चाहिए. दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इशू कैन कम, एंड हाउ यू कैन मिटिगेट? You can manage currency risk by implementing effective hedging strategies such as forward contracts, option, natural hedging techniques, etc. जैसे मैंने आज ही आपसे डिसाइड कर लिया है कि अब सपोज अभी 50 रुपीज चल रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 रुपीज हो सकता है, तो हमने 55 रुपीज में डील पक्का कर लिया. तो इस तरीके से हम हेजिंग स्ट्रेटेजीज वी कैन यूज. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं, एंड दैट हाउ वी कैन मिटिगेट दैट. Now, the second complexity or issues in the financial decision making of multinational enterprises can be political and regulatory risk. So, operating in multiple countries exposes multinational corporations to political and regulatory risk, including changes in government policies, trade tariffs, taxation laws, expropriation, and nationalization of assets. So, आपका ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क के बारे में, तो वहां पर आपके बहुत सारे
रिस्क आ सकते हैं पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड, जिस कंट्री से आप डील करें वहां की गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, उनके ट्रेड टैरिफ से रिलेटेड, उनकी टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड. What is expropriation? It is basically the act of government taking over private property. ठीक है, अचानक से बोल दे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो असेट है, ये मेरा है. ठीक है, so that is expropriation. बेसिकली ये यूएस में भी बहुत बार हुआ है. तो अगर इस टाइप से कुछ हो रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ अ रिस्क, political and regulatory risk in your industry, in your business. So that you have to understand, you have to scrutinize, you have to research well before you are moving to that particular sphere. So this kind of regulatory risk can be there. These risks can affect the profitability and stability of multinational enterprises, operations, and investment in foreign markets. The next complexity and issue is capital budgeting and investment decision. You have, I guess, obviously you all have studied in your graduation, that is your capital budgeting and investment decision in financial management. ठीक है, so you are very well versed what is this capital budgeting, किस तरीके से आप अपने investment opportunities कौन से है और उस तरीके से आप किस तरीके से मैनेज करें अपने फाइनेंसेस को, that is all about your financial management. So वही चीज आपको मल्टीनेशनल स्फीयर में करना है, ग्लोबल स्फीयर में करना है. You have to identify the investment opportunities in different countries with varying economic conditions, regulatory environments, risk profiles, और उनको देखते हुए, उनके risk exchange rate volatility को देखकर, उनके political stability को देखते हुए, उनके market growth potential को देखते हुए, और वो particular project related, project specific risk को देखते हुए, you have to analyze and very carefully, very scrutinizedly analyze कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट ए में होना चाहिए, प्रोजेक्ट बी में होना चाहिए, प्रोजेक्ट सी में होना चाहिए. बाय लुकिंग इनटू दीस फैक्टर्स, दैट इज योर एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, मूविंग टू द फोर्थ इशू और कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज योर फाइनेंसिंग चॉइसेस. व्हाट इज योर फाइनेंसिंग ऑप्शंस? फाइनेंशियल ऑप्शंस आपके पास ये है, इधर आप डेट लीजिए या फिर इक्विटी कीजिए या फिर दोनों का हाइब्रिड कीजिए. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड फंड्स फॉर योर इंटरनेशनल ऑपरेशंस, सो आपके फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी आपके पास होने चाहिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, राइट? सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस? डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड ऑफ दिस. बॉन्ड्स ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं. सो दिस कैन कम अंडर दिस फाइनेंसिंग चॉइसेस. So factors such as cost of capital, access to capital markets, credit ratings, regulatory constants influences the financing choices and capital structure decision. तो obviously cost of capital क्या है वो आपको पता होना चाहिए. Capital market को आप access कर पा रहे हैं कि नहीं, जहां से आप लोन ले रहे हैं, जहां से आप डेट ले रहे हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग्स कैसी है वो आपको पता होना चाहिए. रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स है कि नहीं उस पर्टिकुलर फाइनेंसिंग डिसीजन में, आपका अमाउंट वहां पर ब्लॉक हो जा रहा है कि नहीं, और जहां से आप सोर्स कर रहे हो वो कितने रिलायबल है. Every kind of aspect in this financing, source of financing, you have to understand carefully. That is your another issue or challenge. Then we have your transfer pricing. So transfer pricing क्या होता है? It refers to the pricing of goods, services and IP transferred between related entities within an M&E group. आप जब एक ही प्रोडक्ट को आप अपनी सब्सिडी को दे रहे हैं और आप अपने सब्सिडी के कंपटीटर को दे रहे हैं, तो आप कौन से प्राइसिंग में अपनी सब्सिडी को दे रहे हैं, क्या आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग. सो इट रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर between related entities within an M&E group. आपके ही सब्सिडीज के अंदर आप किस तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस क्या है, क्या कॉम्प्लायंसेस है जिस कंट्री में आपकी सब्सिडी है, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, किस तरीके से आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हो और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और आप किस जुरिस्डिक्शन में आ रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए when we are talking about transfer pricing. ठीक है? Then next is the next complexity and issue is your tax planning and optimization. So multinational enterprises engage in tax planning strategies to minimize their global tax burden while compiling with local tax laws and regulations. So जो global tax burden है, how much you have to pay, how much corporate tax you have to pay, how much income tax you have to pay, that cohesive tax burden you should know. You should understand the local tax laws and regulations. You should carefully plan your tax optimization.
This involves structuring operations, intercompany transactions, transfer pricing agreements in tax-efficient manner, which can be challenging given the complexity of international tax regimes and increasing scrutiny from tax authorities. So obviously, ये जो strategies hai of tax planning or optimization, which consist of your transfer pricing arrangements, which consist of your intercompany transactions, which consist of your structuring operations, ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स है. इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपको समझना आना चाहिए. इनको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो आपको आना चाहिए, और आपके इंटरनेशनल टैक्स रिजाइम कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज एंड कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन वी आर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. Then next we have your cross-border mergers and acquisition. So multinational enterprises often pursue mergers and acquisitions as a growth strategy to expand their global footprint and gain strategic advantages. So what is a merger? What is an acquisition? You should be aware of merger when दोनों कंपनी आपस में agreement करके एक new entity form करते हैं, that is a merger. And acquisition जब एक company A कंपनी B को purchase कर लेती by giving a purchase consideration and acquire कर लेती, ठीक है, उनके stakes, उनके voting rights, उनके shareholders capture कर लेती, that is coming under acquisition, ठीक है. So M&As often pursue mergers and acquisition ताकि वो अपनी growth strategy को expand कर सके, अपनी global footprint को increase कर सके, एक strategic advantages वो gain कर सके, ठीक है. But this cross-border mergers and acquisition is not so easy. अभी हम unit 2 पढ़ेंगे, वो पूरा आपके क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पर ही है, ठीक है. तब आप समझेंगे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ, इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल, लीगल, रेगुलेटरी, कल्चरल, it as well as integration challenges post acquisition. Acquire करने के बाद भी बहुत सारे challenges से गुजरना पड़ता है, cultural challenges, legal challenges, there are various challenges even after the pre-acquisition and post-acquisition. Then we have your financial reporting and compliances. Multinational enterprises must adhere to the multiple accounting standards and regulatory requirements across different jurisdictions, which can lead to complexities in financial reporting and compliances. Harmonizing financial reporting practices and ensuring transparency and consistency in financial disclosure is crucial for maintaining credibility with stakeholders. What it means that आपके multiple subsidiaries है, तो multiple subsidiaries के अलग-अलग accounting standards क्या आप follow करेंगे, क्या आप अलग-अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे, या एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप यूज करेंगे जो हर एक कंट्री में सेम हो, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, ठीक है. सो सपोज मेरी कंपनी है इंडिया में और इसकी सब्सिडीज डिफरेंट फॉरेन कंपनीज में है, और मैं यहाँ पर इंडियास फॉलो कर रही हूँ, दूसरी कंट्री में मैं IFRS फॉलो कर रही हूँ, तो क्या कंपैरिजन करने के लिए क्या वो फिजिबल होगा? नॉट एट ऑल, ठीक है. सो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए मैं ठीक तरीके से कम टाइम पर मैं फाइनेंशियल डिसीजन ले सकूं, उसके लिए आई शुड हैव अ कांस्टेंट सिमिलर काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. Then another and the most important issue is your corporate governance and stakeholder management. Corporate governance you should aware of. It is a आपने शायद first year में भी पढ़ा होगा. It is your subject. You are well aware of. What is corporate governance? It is basically how you are balancing the interest of shareholders, employees, customers, governments, and other stakeholders while maintaining the ethical standards. आपके ethical standards high होने चाहिए. Ethical standards को आप follow कर रहे हैं, CSR follow कर रहे हैं, long term sustainability को मद्देनजर रखते हुए, reputation of management को मद्देनजर रखते हुए, you are following this corporate governance coming under that program. Okay? So M&As operate in diverse cultural, legal, and regulatory environments, which can pose challenges for corporate governance practices and stakeholder management. So आपके stakeholders consist of your creditors, your debenture holders, your equity shareholders. बहुत सारे stakeholders हो सकते हैं. तो वो stakeholders different countries में हो सकते हैं. उनके language barriers हो सकते हैं, उनके cultural barriers हो सकते हैं, उनके legal tax related compliances हो सकते हैं. तो उन सब चीजों को आप किस तरीके से follow करते हैं, किस तरीके से उसको maintain करते हैं, manage करते हैं, coming under this complexity and issue under this corporate governance and stakeholder management. Okay? So navigating these complexities and addressing these issues required multinational enterprises to adopt a strategic and integrated approach to financial decision making, leveraging expertise in finance,
accounting, taxation, risk management, international business operations. So अगर आपने ये जो issues है, ये complexities है, ये जो 9 issues, 9 complexities है, उसको आप strategically integrate कर सकते हैं अपने business operations में. आप अगर अपने financial decision making में इन approaches को use कर सकते हैं, then आपकी finance related, accounting, taxation, risk related and international management, business operations related चीजों को आप easily approach कर सकते हैं in an integrated and strategic manner. Collaboration across functional areas and effective communication with stakeholders are key to mitigate risk and maximizing value creation in global marketplace. So आपका maximize आप value किस तरीके से create करें, maximize करें, वो आपको आना चाहिए. ठीक है? So these are the 9 issues and complexities of financial decision making of multinational enterprises. I guess it is clear to all of you. Let me see if you have any doubt. No doubt. Chat is turned off. Where chat is turned off? चलिए आप लोग अपने डाउट्स को याद रखिएगा. अभी मैं चैट ऑन करवाती हूँ, उसके बाद फिर आप उस चैट बॉक्स में अपने चैट्स, अपने डाउट्स पुट करते रहिए. चलिए आगे करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Yes, that is decisions in global settings. So अब हमने देख लिया इतने सारे इश्यूज है, कॉम्प्लेक्सिटीज है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग लेने के लिए. अब हम किस तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं. The first one is your market entry strategies. आप किस तरीके से मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपेंशन आप किस तरीके से करना चाहते हैं. Whether you want to do go through with the exports, whether you want to do licensing, joint ventures, strategic alliances, franchising, foreign direct investments, या फिर आप whole owned subsidiaries put out करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है. As a multinational enterprises, it is on your verge that what kind of market entry strategies you want to take, right? Because every market entry strategies have their own benefits, own risk, own resource requirements. So you have to carefully evaluate, you have to carefully make strategic planning for that. जैसे हम बात करें अगर एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स में आपको वाइड ग्लोबल एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है. आप किसी किसी जगह पर उतने ही लिमिटेड आर्टिकल्स को भेज सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली आप एडवांटेज ये है कि आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपका कॉस्ट ज्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा है. तो हर एक यहाँ पर जो भी हमारे फॉरेन मार्केट्स है, एंट्री टू फॉरेन मार्केट्स, मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज है, सारे हमारे टाइप्स ऑफ एंट्री मोड्स है, वो सारे के अपने बेनिफिट्स है, अपने रिस्क है, अपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स है. तो आपके हिसाब से आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके हिसाब से आपके लिए क्या थ्रेट है, उसी से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है. ठीक है. देन वी हैव प्रोडक्ट एंड सर्विस अडॉप्शन. Okay, moving to the next point. Yes, the second decisions in global setting you can take regarding your product and service adaptation. So you should know कि whatever services you are providing, whatever products you are producing,
whether that is suiting the preferences of that customers whom you are targeting, right? So local preferences, cultural norms, regulatory requirements in different marketplace, you have to understand that. Decisions regarding product design, features, packaging, branding, pricing, distribution channels are based on market specific considerations. So आप जिस कंट्री को आप टारगेट करें, जिस कंट्री के कंज्यूमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उस कंट्री के कंज्यूमर्स की क्या प्रेफरेंसेस है, कल्चरल नॉर्म्स है, उस पर बुनियाद होता है कि आपका प्रोडक्ट डिजाइन क्या होगा, फीचर्स क्या होगा, पैकेजिंग कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसा होगा, प्राइसिंग कैसा होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे होंगे. ठीक है. Then we have your supply chain management. Managing global supply chains involves decisions related to sourcing, procurement, production, inventory management, logistics, distribution across multiple countries. So आप किस तरीके से प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हो, उसको प्रोक्योर कर रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो कि कोई स्पॉइलेज में तो नहीं जा रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, फिर लॉजिस्टिक्स देख रहे हो आप कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो एंड कस्टमर तक जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रहे हो. सो इस तरीके से आप एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट करते हो. सो यू हैव टू बैलेंस योर कॉस्ट कंसिडरेशंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लीड टाइम्स, सप्लाई चेन रेजिलियंस व्हाइल मिटिगेटिंग रिस्क सच एज जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर एंड डिस्ट्रप्शंस इन ग्लोबल ट्रेड. सो यू शुड अवेयर ऑफ कि आपके कॉस्ट कंसिडरेशन क्या है, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, लीड टाइम क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या नहीं, मतलब वहां पर सिर्फ कितने पर्टिकुलर डेज इन अ मंथ ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ है कि नहीं, कितने टाइम बाद कितने फ्रिक्वेंटली नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं ग्लोबल ट्रेड में, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है. Then another decisions in global setting is taking regarding your currency and financial risk management. So businesses operating internationally face currency risk exposure due to fluctuations in exchange rates, which can impact revenues, expenses, profits, and cash flows. So currencies, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आप करेंसी रिस्क एक्सपोजर को, आपके जो करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस हो रहा है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो रहा है, उससे आपके रेवेन्यूज को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, एक्सपेंसेस को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, प्रॉफिट्स, कैश फ्लोज को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, और उसको मिटिगेट करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, हेजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, what kind of financing options you are using, whether debt, whether treasury management, ये सारे आपको पता होना चाहिए. You should strategically take decisions for that. ठीक है. Then we have your international pricing strategies. So अपने कंट्री में जब जो प्राइसिंग रख रहे हो, क्या वो सेम प्राइसिंग आप जापान में भी रखोगे, क्या वो सेम प्राइसिंग आप ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर्स के लिए भी रखोगे, और सेम क्या आप अफ्रीकन कंज्यूमर्स के लिए भी रखोगे. ये डिपेंड करता है टोटली कि आपकी कंट्री की परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है. You are operating in an underdeveloped country or a developing country or a developed country, and the type of quality you are providing, the kind of competitive dynamics you are providing, the type of advantage you are providing, and how the customer is preferring your product over the others, and what kind of exchange rate fluctuations are there, इस पर टोटली आपका डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है. So organization must determine whether to adopt standardized pricing कि हर कंट्री में irrespective कि वो underdeveloped countries हो, developing countries हो या developed countries हो, आप हर जगह सेम प्राइसिंग रख रहे हो, ये आप रख सकते हो. इसके अलावा आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर सकते हो कि इस कंट्री में लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में मुझे इतना कॉस्ट लगा है, प्लस उसमें मेरा 20% मार्जिन में रखूंगी, तो दिस इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कि इतना कॉस्ट लगा है, उस पर इररेस्पेक्टिव कि वो कौन सी टाइप की कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, जितना कॉस्ट टोटल लगेगा उस पर 20% मेरी प्रॉफिट लगाकर और मैं उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में सेल करूँ. ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा मार्केट बेस्ड प्राइसिंग. मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मतलब आपके कंपटीटर्स उस पर्टिकुलर कंट्री में किस प्राइस में सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट. ठीक है. सो दैट इज योर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग. सो दैट इज यू शुड अंडरस्टैंड. देन अदर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज
टेलर टू स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस, जैसा मार्केट कंडीशंस हो, अगर बूम हो रहा है या वेन हो रहा है, किस टाइप का मार्केट कंडीशंस है, उस तरीके से मैं इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उस तरीके से प्राइसिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में तीन बेसिक आते हैं। आपकी स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग, इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग इज देयर, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज देयर, जहां पर आप कॉस्ट प्लस एक स्पेसिफिक प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो। देन योर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, जहां पर आप मार्केट कंज्यूमर्स के कंपीटिटिव डायनामिक्स को देखकर, कस्टमर प्रेफरेंसेस को देखकर, परचेसिंग पावर पैरिटी को देखकर, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को देखकर आप मार्केट बेस्ड प्राइसिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस दैट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट. Managing a diverse workforce across multiple countries requires decisions related to recruitment, talent development, training, compensation, performance management, and cross-cultural communication. So obviously India एक diverse country है, यहाँ पर इतने सारे regions है, religions है, languages है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कंपनी में ही डाइवर्स वर्कफोर्स हो जाता है, उनको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम इंटरनेशनल स्फीयर की बात करें, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं। सो एक रिक्रूटमेंट रिलेटेड टैलेंट को डेवलप करने में, ट्रेनिंग करने में, उनको कंपनसेशन देने में, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने में और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करने में, इट रिक्वायर्स ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट. So what the organization can do? Organization must foster an inclusive work culture and leverage the skills and perspectives of employees from different cultural backgrounds, drive innovations and competitiveness. So organization को क्या करना चाहिए? Inclusive work culture बनाना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव्स को लेवरेज करना चाहिए ताकि इनोवेशन को डिराइव कर सके, वो कॉम्पिटिटिवनेस को डिराइव कर सके. And the last one is your regulatory compliances and risk management. So operating in multiple jurisdiction entails compliances with diverse legal, regulatory and tax requirements, spanning areas such as trade regulations, IP, labor laws, environment regulations, data privacy laws, anti-corruption laws. So हर country के अपने अपने tax requirements, regulations, IP laws, labor laws, environment regulations, data privacy laws, ये सब कुछ है. तो आप जब एक दूसरे कंट्री में जा रहे हैं for the international business, for international financial management, so you should carefully scrutinize these all requirements. Yeah. So decisions regarding risk assessment, compliance strategies, and ethical conduct are essential for maintaining legal and ethical standards while minimizing exposure to regulatory and reputational risks. Apart from that, और तो हमारे points हैं, that is technological adoption and digital transformation. From the past 2 decades, you are seeing that कि टेक्नोलॉजी एक बूस्ट हो गया है. ठीक है, हम बात कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, हम बात कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स की, अभी हम रिसेंटली बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड कंप्यूटिंग, देन योर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड डिसीजंस आपको लेना है ताकि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिकेसी इंक्रीज हो, आपकी एजाइलिटी, इनोवेशन, customer engagement, business relations, ये सब एक rapidly evolve in this global marketplace. That is, you have to be scrutinized. Then another decision you have to take regarding your strategic partnership and alliances, like your suppliers, distributors, industry associations, research institutions, government agencies, ताकि वो आप resources को properly access कर सको, expertise आपको मिले, networks create कर सको, आपको प्रॉपर एक्चुअल मार्केट इनसाइट्स मिले, जिससे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज है उसको वो कंप्लीमेंट कर सके और आपको एक एक्सेलरेट ग्रोथ मिल सके, आपको एक किक मिल सके इन योर इंटरनेशनल ग्रोथ. So this decision regarding partner selection, alliance structures and relation management are crucial for fostering successful collaboration and achieving mutual objectives. ठीक है? So relations in global setting requires a strategic and integrated approach that considers the interplay of economic, political, social, technological, and cultural factors shaping international business environments. And as a result, you should carefully take decisions in a global setting in a much better way. Okay? I guess that is clear to all of you.
I guess you can raise your hands. If you raise your hands, I will unmute you if you have any doubt. Okay, moving forward with the next topic. If you see the syllabus, we have done with the globalization and multinational enterprises, environment of IFM, complexities and issues in financial decision making, decisions in global setting. Now moving to the fifth topic of the class, that is your exchange rate market, spot and forward market. Yeah, very important, very crucial for taking decisions regarding your international financial management. Before that, let me show you a table. It's the Alan C. Shapiro book, which I've already provided in your group. You can refer from there. So let's talk about your foreign exchange market. Okay? Foreign exchange market, exchange rate. What is exchange rate? For that, you have to understand what is exchange rate. It is simply the price of one nation's currency in terms of another currency, often termed as reference currency. Okay? For example, अगर हम बात करें yen per dollar, तो exchange rate, तो फिर ये एक number बता रहा है कि 100 yen equals to $1. So that is the exchange rate, right? So that is a yen is a reference currency. So equivalently, अगर हम बोल रहे हैं dollar per yen, so that's the exchange rate in the number of dollars one yen will buy. So continuing the previous example, the exchange rate will be $0.1 equals to per yen. The dollar would be now more now for the reference currency. So reference currency क्या होता है? जिस currency के बदले आप दूसरी currency को refer कर रहे हैं, right? So अगर आप बोल रहे हैं yen per dollar is the exchange rate, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपको $1 परचेस करना है तो आपको 100 yen देना पड़ेगा. तो exchange rate would be $1, 100 yen is equal to $1. ठीक है, तो ये रेफरेंस करेंसी. सिमिलरली अगर हम इसको रिवर्स कर दे, दैट इज $0.01 पर yen, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डॉलर अब यहाँ पर रेफरेंस करेंसी हो गया. मतलब जो पहले आ रहा है उसको हम रेफरेंस करेंसी बोलते हैं. ठीक है, ये समझ आया? So if there is a single international currency, if the foreign exchange market is not a physical place, rather it is an electronically linked network of banks, foreign exchange brokers, dealers, whose function is being together buyers and sellers of foreign exchange. So foreign exchange market क्या है? कोई physical place नहीं है. It is an electronically linked network जिसमें banks आते हैं, आपके foreign exchange brokers आते हैं, आपके commercial banks आते हैं, international banks आते हैं, dealers आते हैं, जो कि एक साथ मिलकर ये buying and selling का transactions of sellers of foreign exchange. The foreign exchange market is not confined to any country, but it is dispersed throughout the leading financial centers of the world, including London, New York, Paris, Zurich, Amsterdam, Tokyo, Hong Kong, Toronto, Frankfurt, Milan, and other cities. Trading has historically been done by telephone, telex, and SWIFT system. पहले क्या होता था? Trading आज से 100 years पहले तब भी financial management था, तब भी businesses थे, तब भी ट्रेडिंग होती थी. उस टाइम पर किस तरीके से होता था? उस टाइम पर ट्रेडिंग टेलीफोन से, टेलेक्स से या स्विफ्ट सिस्टम से. व्हाट इज स्विफ्ट? बेसिकली इट इज अ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. जिससे कि सारे ब्रोकर्स और ट्रेडर्स इंटरलिंक्ड होते थे इलेक्ट्रॉनिकली, एंड वो बताते थे कि इस तरीके से एक पर्टिकुलर डे में
क्या रेट है, क्या ट्रांजैक्शन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी, ठीक है। The SWIFT network connects more than 11,000 banks and broker-dealers in 200 countries and processes more than 29 million transactions in a day. Its mission is to transmit standard forms quickly to allow its member banks to process data automatically by bank. तो माइक्रो मिली सेकेंड्स में वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं ताकि कोई भी उसका अनड्यू एडवांटेजेस ना ले सके। जो भी अगर सपोज एक्स कंट्री में करेंसी चल रहा है $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज और दूसरे कंट्री में चल रहा है $1 इक्वल्स टू 100.25 रुपीज, ठीक है। बस 25 पैसे का डिफरेंस है और ये इंफॉर्मेशन अगर 2 मिनट बाद पहुंचे तो यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट कैन कॉस्ट बिलियंस ऑफ मनी, ठीक है। सो ये जो कोई भी करेंसी, दो करेंसी के बीच में कोई मिसमैच ना हो, इसके लिए स्विफ्ट नेटवर्क इज देयर ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर फॉरेन एक्सचेंज दैट इज ट्रांसमिटेड quickly to the member banks so that they can process the data automatically by computers. So all type of customers and bank transfers are transmitted as well as foreign exchange deals, bank account settlements and administrative services. To use SWIFT, the corporate client must deal with domestic banks that are subscribers and with foreign banks that are highly automated. SWIFT को यूज करने के लिए आपके पास कॉर्पोरेट जो क्लाइंट्स हैं वो डोमेस्टिक बैंक से साथ डील करना चाहिए. They should be the subscribers and with the foreign banks and highly automated होना चाहिए. Like many other proprietary data networks, SWIFT is facing growing competition from internet-based systems that allow both banks and non-financial companies to connect to a secure payment network. Although one might think that most foreign bank exchange trading is derived from export and import activities, this turns out not to be true the case. In fact, trading goods and services accounts for less than 5% of foreign exchange trading. So foreign exchange trading है उसमें trade जो है actual trade और goods and services is only a 5%. 95% of foreign exchange trading relates to cross-border purchases of sales of assets and international capital flows. So इसके लिए आपको माइनट सेकेंड्स में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या है, दो कंट्री की करेंसीज को आप किस तरीके से पैक कर रहे हैं, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट दैट यू शुड बी केयरफुली नो, ठीक है. Moving forward, what is the exchange rate and what is the spot rate and forward rate? So exchange rates can be of two types, that is your spot or forward delivery. स्पॉट रेट हम किसको बोलेंगे, हम स्पॉट रेट उस प्राइस को बोलेंगे जिसमें करेंसी ट्रेड कर रहे हैं हम इमीडिएट डिलीवरी के लिए, जहां पर एक्चुअल डिलीवरी हो रहा है. The spot rate is the price at which currencies are traded for immediate delivery. Actual delivery takes place 2 days later. 2 दिन बाद एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, लेकिन इमीडिएट डिलीवरी के लिए आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपका स्पॉट रेट. A forward rate is the price at which foreign exchange is quoted for delivery at a specified future date. जहां पर स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज को फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम इस रेट पर डील करेंगे, दैट इज अ फॉरवर्ड रेट. So the foreign exchange market where currencies are traded is not a physical place, rather it is an electronically linked networks of banks, foreign exchange brokers, dealers whose function is to bring together buyers and sellers of the foreign exchange. तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसमें हम स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हैं, ये एक फिजिकल मार्केट नहीं है, फिजिकल प्लेस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड नेटवर्क से बिटवीन देयर पार्टिसिपेंट्स. Then we have your demand of currency, supply of currency. You can read just a quick read, but not relevant for your revision class. The demand for the euro in foreign exchange market derives from American demand for eurozone goods and services, and that's all. You can read here. This is the diagram how there's a dollar price of €1 and how in the x-axis there's a quantity of euros. So how we are achieving the equilibrium exchange rates, that is we are in the spot exchange rate. That is, in this case, we are assuming that €1 is equal to E dollar and Q is a quantity euros supplied by and demanded. So since euro is expressed in terms of dollars, the dollar is the reference currency.
The euro supply S and demand D curve intersect at E0. यहाँ पर E0 पर intersect करें. This is a E0. This is a supply curve of currency. This is a demand curve of currencies, foreign exchange currencies. और यहाँ पर meet करें. So this is a E0. This is the equilibrium exchange rate. The foreign exchange market is said to be equilibrium at E0 because both the demand for euros and supply of euros at this price is Q0. So this price per quantity Q0 पर same इस price पर 1 euro equals to E dollar. That's the equilibrium point. Yes, moving forward, what are the factors that affect the equilibrium exchange rate? A quick thing, just a revision. क्या क्या factors होते हैं जो कि ये जो exchange rates है इसके equilibrium को affect कर सकते हैं? First of all, your inflation rates, relative inflation rates, कि आप के कितने inflation हो रहा है इस particular country के जो fluctuations है currencies में उससे कितना inflation हो सकता है, ठीक है? So that is one of the reasons for that. Another thing can be related to interest rates. The real interest rate is approximately as the nominal or actual interest rate minus the rate of inflation. So you should note that how the interest rate differentials can also affect that equilibrium exchange rate. That is the relative interest rates. Apart from that, there can be relative economic growth rates. Economic growth rates that is measured in terms of GDP, that is gross domestic product. That is basically total value of goods and services produced in a particular country, in a particular area, a particular time frame, regardless of the nationality of the owners of the products. ठीक है? Suppose एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस है, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको हम क्या इंडिया के जीडीपी में पुट करेंगे? यस, ऑब्वियसली, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस किस कंट्री से बिलोंग करता है, हम अपने कंट्री के जीडीपी में ही उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में हो रहा है. ठीक है? The demand for domestic assets results in an increased demand for domestic currency and a stronger currency other than being equal. So, relative economic growth rates also impact your equilibrium currency rates. Then we have your political and economic risk. If there is investors prefer to hold lesser amounts of riskier assets, thus low risk currencies, those associated with more political and economical stable nations, are more highly valued and high risk currency. जो कंट्रीज में मोर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस कंट्री की करेंसीज हाईली वैल्यूड होती है. हाई रिस्क करेंसीज, उसको हाई रिस्क करेंसीज हम नहीं बोलते, उसको हम लो रिस्क करेंसीज बोलते हैं बिकॉज दे आर हाईली वैल्यूड, बिकॉज वहां पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है. जैसे हम जिसको हम बास्केट्स बोलते हैं, बास्केट्स में आपके डॉलर्स आते हैं, येन आते हैं, राइट, पाउंड आते हैं, ये सारे आपके हाईली वैल्यूड लो रिस्क करेंसीज है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव योर हाई रिस्क करेंसी which are not so valued currencies, जिसमें risky है, उसको hold करना तो risky है, तो that is another consideration which can impact your equilibrium of currencies. ठीक है? अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, थोड़े से देखते हैं किस तरीके से हम एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट चेंजेस. Depending upon the currency value of the euro relative to the dollar, the amount of euro appreciation or depreciation is computed as a fractional increase or decrease in the dollar value of the euro. For example, एक example लेते हैं. Euro per dollar exchange rate goes from 1 euro equals to $0.93 to 1 euro to $1.09. ठीक है? Suppose एक exchange rate एक यूरो इक्वल्स टू $0.93 से $1.09 पर पहुंचती है. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो यूरो है वो अप्रिशिएट हुआ है बाय चेंज इन इट्स डॉलर वैल्यू. ठीक है? कितना परसेंट चेंज हुआ है? 17.20% चेंज हुआ है. तो हमने क्या बोला कि यूरो की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है. इसका जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है? The amount of euro appreciation or depreciation equals to new dollar value of euro. New dollar value कितना हो रहा है? Minus old dollar value कितना था upon old dollar value of euro. तो यहाँ पर हमने वही लिया है. New dollar value हमारा कितना हो गया था? $1.09 हुआ है, वो हमने लिया, माइनस
ओल्ड डॉलर वैल्यू कितना था हमारा $0.93, दैट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, इट इज योर ओल्ड डॉलर वैल्यू ऑफ यूरो। ओल्ड डॉलर वैल्यू हमारा क्या था 0.93, सो डिनोमिनेटर में हमारा 0.93 which is equal to your 17.20%. तो हम ये बोल सकते हैं कि अप्रिशिएट कितना हुआ है 17.20%. Okay, so alternatively we can calculate the change in euro value of dollar. अब यहाँ पर हम एग्जांपल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. We can do this by recognizing that if equals to the dollar value of a euro, dollars per euro, then euro value of a dollar must be reciprocal. ठीक है. अगर हम ये बोले कि 1 equals to e, that is 1 euro equals to $0.93, तो यहाँ पर डॉलर की वर्थ हमारी हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की. हम फ्लक्चुएशंस अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम -14.68%. Simple calculation, nothing much difficult. You should understand the formula, that is your how we can understand the change in foreign currency, that is new dollar value of euro minus old dollar value of euro divided by old dollar value of euro. If you want to understand the change in domestic currency, then the formula is your 1 upon E1 minus 1 upon E0 upon 1 upon E0. That is simply E0 minus E1 upon E1. That is your old dollar value of euro minus new dollar value of euro upon new dollar value of euro. तो आपको ये देखना है कि अगर अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हुआ है अपनी फॉरेन करेंसी में, तो आप किस तरीके से देखेंगे, न्यू डॉलर वैल्यू ऑफ यूरो माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड. एंड अगर आपको अपने करेंसी डोमेस्टिक करेंसी के चेंज को देखना है, देन आपका old minus new upon new. ठीक है. I guess that is clear to all of you. Here are more examples how you can calculate yen appreciation against dollar, how you can calculate dollar appreciation against the Thai baht. So you can do it by yourself, I guess. Then you have calculation of depreciation in pound against dollar after the Brexit vote. This kind of example, this kind of question you might get in your exams. That in June 24, 2016 was an ill-fated date for British pound. On that day, markets responded negatively to the Brexit referendum when the British people voted to leave the European Union. In the morning, the pound brought rupees, not rupees, US dollar 1.4883, and the end of the day it is bought at 1.3694 US dollar. कितना ज्यादा डिप्रिशिएट हो गया. तो कितना डिप्रिशिएट हुआ, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, राइट? क्या फॉर्मूला था, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, राइट? सो हमारा कितना हो गया -8%. और अगर हम देखें कितना डॉलर अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट पाउंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स इक्वल टू योर 0.73 minus 0.67 upon 0.67, that is your new minus old upon, yeah, that is 8.68%. Similarly, you can see how you can calculate Afghani appreciation against the Pakistani rupee. So this is all about your foreign exchange market and your how you can what is spot market and what is forward market. ठीक है. अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर. यस, प्लीज. Now let's recap what is foreign exchange market and what is the purpose of that and how it is interconnected. पर्पस क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, कि जो परचेसिंग पावर डिनोमिनेटेड इन वन करेंसी टू अनदर, उसको इजीली हम ट्रांसफर कर सके. दैट इज टू ट्रेड वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी. फॉर एग्जांपल, अ जापानीज एक्सपोर्टर सेल ऑटोमोबाइल्स इन यूएस डीलर फॉर डॉलर्स एंड यूएस मैन्युफैक्चरर सेल्स मशीन टूल्स टू जापानीज कंपनी फॉर येन. तो करेंसी कन्वर्शन ना करना पड़े, हम इजीली कन्वर्ट कर सके. दैट इज कमिंग अंडर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. Most currency transactions are channeled through the worldwide interbank current. हमने स्पॉट मार्केट क्या होता है ये पढ़ लिया, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है ये पढ़ लिया हमने.
स्विफ्ट क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ कमिंग टू द पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आते हैं हमारे? पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर योर फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, commercial customers, commercial banks, multinational corporations, central banks, which intervene in the market from time to time to smooth exchange rate fluctuations or to maintain target exchange rates. Central bank interventions involving buying and selling in the market is often indistinguishable from foreign exchange dealings of commercial banks or of other private participants. So हमारे participants में कौन-कौन आते हैं? We have understood that हमारे large commercial banks आते हैं, foreign exchange brokers आते हैं, interbank market, commercial customers, multinational corporations and central banks. Central banks are important because वो intervene करती है market में, foreign exchange market में, buy करती है, sell करती है foreign exchanges को, ताकि जो कमर्शियल बैंक के साथ उनके डीलिंग्स है, प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के साथ जो डीलिंग्स है, उसको वो मेंटेन कर सके, मिटिगेट कर सके. ठीक है. Only the head offices or regional offices of the major commercial and investment banks are actual market makers. That is, they actively deal in foreign exchange for their own accounts. These banks are ready to buy or sell any of the major currencies on a more or less continuous basis. So जो head offices होते हैं, regional offices होते हैं, major commercial and investment banks के, वो एक huge amount में buy and sell करते हैं major currencies को on a continuous basis. So we can say they are the major participants in this foreign exchange market. यहाँ पे हम diagram देख सकते हैं. ये हमारे top 10 financial institutions है, जहाँ जो आपके top 10 financial institutions that are market makers and their estimated market shares. कौन है? सबसे पहले सिटी ग्रुप है, having a 10.74%, JP Morgan with 10.34%, followed by UBS, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs, Barclays and BNP Paribas. So इस तरीके से these are the top 10 and their market share and how they are having a market share in the foreign exchange market. Then another participant in foreign exchange market is your foreign exchange brokers. These are the specialists in matching net supplier and demander banks. These brokers receive a small commission on all trades, traditionally one upon 32. That is 1% of US in certain currencies, but they all handle major currencies such as pound sterling, Canadian dollar, euro, Swiss franc, and yen. So brokers supply information कि कौन सा बैंक बाय करना चाहता है, कौन सा बैंक सेल करना चाहता है करेंसी को, at what rate. ठीक है. And they provide anonymity to the participants until a rate is agreed. Anonymity रखते हैं, anonymous होते हैं. कब तक? जब तक एक रेट डिसाइड हो जाए कि कितने में बाय होना चाहते हैं, कितने में सेल करना चाहते हैं करेंसी को, किस रेट में करेंसी को सेल या बाय करना चाहते हैं. Because knowing the identity of another party may give dealers an insight into whether that party needs or has a surplus of the particular currency. So broker क्या बोलते हैं? पार्टी A है, पार्टी B है. पार्टी A कौन है, पार्टी B कौन है, वो नहीं बताते हैं. वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं. कौन? फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स. पार्टी A को बोलते हैं कि ये करेंसी इतने में सेल करना चाहते हैं और पार्टी A को बोलते हैं ये इतने में बाय करना चाहते हैं. वो डिस्क्लोज क्यों नहीं करते कि पार्टी A पार्टी B कौन है? क्योंकि इससे पता चल सकता है कि वो जो पार्टी है, वो जो पार्टिसिपेंट है, वो कितने मतलब वो कितने स्ट्रांग है. ठीक है. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें वो पार्टी को सरप्लस चाहिए उस पर्टिकुलर करेंसी का या डिफिशिएंट चाहिए. So and that's how the foreign exchange brokers help कि वो mitigate करते हैं, दोनों के बीच में एक intermediary की तरफ काम करते हैं, and they help banks to minimize their contracts with other traders. As in the stock market, the role of human brokers has declined as electronic brokers have significantly increased their share of foreign exchange businesses. So physical brokers are not as much there, decline हो चुके हैं human brokers. अब electronic brokers are more there. So जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो पार्टीज के बीच में एक इंटरमीडिएट एक लिंक की तरह काम कर रहे हैं, जो कि स्पेशलाइज होते हैं आपके स्पेशल सर्टेन करेंसीज में, जैसे कि आपके पाउंड स्टर्लिंग हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, यूएस डॉलर हो गया, यूरो, सैंड्स, फ्रांसिस येन, और दो पार्टीज के बीच में वो ट्रेडिंग करवाते हैं. ठीक है, कि किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, एंड एट व्हाट रेट
at which rate. तो banks के बीच में that is the role of foreign exchange brokers. Then we have another participant, that is your arbitrators. The major participants in the forward market can be categorized as arbitrators, traders, hedgers, and speculators. So forward market, foreign exchange market में हम चार मेजर पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं, जो कि आपके आर्बिट्रेटर्स हैं. आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? जो कि रिस्क फ्री प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट्स अमंग कंट्रीज. दो कंट्रीज के बीच के इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंसेस का एडवांटेजेस लेकर. कैसे? फॉर एग्जांपल, country A is offering interest at 7.2%, country B is offering interest at 7.3%, तो there is a difference of 0.1%, तो वो A से लोन लेकर B में सेल कर देगा, तो इससे वो 0.1% का प्रॉफिट ले सकता है. So there is a arbitrage को कोई रिस्क नहीं है, risk free profits by taking the differences in interest rates among the countries. So they use forward contracts to eliminate the exchange risk involved in transferring their funds from one nation to another. अब obviously foreign exchange currencies है, उसके बीच में दो countries है, दोनों के अलग अलग interest rates है और दोनों country के अलग अलग foreign exchanges है. तो उस चीज को mitigate करने के लिए कि जो 0.1% का मुझे difference मिल रहा है, profit में ले सकता हूँ, लेकिन वो loss में convert हो सकता है क्योंकि currency आपकी fluctuate करती है, आपकी foreign exchange currencies fluctuate करती है, तो उस risk को भी वो mitigate करते हैं. कैसे? By using the forward contracts की, irrespective of whatever rates are going in the foreign exchange market, मैं तो इसी रेट में करूंगा. इस टाइप का जो डील करते हैं with another party that is coming under this forward contracts. ठीक है? Then another major participants of this forward contract is your traders. Traders कौन है? Traders use forward contracts to eliminate or cover the risk of loss or export or import orders that are denominated in foreign currencies. Traders वो होते हैं जो forward contracts को use करते हैं ताकि वो risk को eliminate कर सके. किस चीज के risk को? Risk of loan, risk of import, risk of export, इन सारे को वो जब eliminate जिस forward contracts करते हैं वो है traders. ठीक है? So traders are major participants of forward market. मुझे एक चीज आप दूसरे X कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, अभी प्राइस चल रहा है $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज. जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, जब वो पेमेंट करेंगे, तब माइट बी द एक्सचेंज रेट चेंज. तब $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज भी हो सकता है एंड $1 इक्वल्स टू 25 रुपीज भी हो सकता है. तो मेजर डिफरेंसेस कैन बी देयर. सो ट्रेडर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं ताकि वो इस टाइप के रिस्क को मिटिगेट कर सके. Then the next participant in this foreign exchange market is your hedgers, or your forward contracts में कौन participant है? Hedgers. So hedgers, mostly multinational firms, engage in forward contracts to protect the home currency value of various foreign currency denominated assets. Arbitrator hedgers hedgers कौन है? Mostly multinational firms engage in forward contracts to protect the home currency values of various foreign currency denominated assets and liabilities on their balance sheets that are not realized over the life of contracts. So वो hedgers वो है जो multinational firms होते हैं basically, जो forward contracts को में involve होते हैं in order to protect their home currency value with respect to the foreign currency denominated. Then we have speculators. So in contrast to all these types of forward market participants, speculators actively expose themselves to currency risk by buying or selling currencies forward in order to profit from exchange rate fluctuations. So speculators ये speculate करते हैं कि fluctuations होगा, उससे मैं कौन सा फायदा ले सकता हूँ, exchange rate से मैं कैसे profit reap कर सकता हूँ. So their degree of participation does not depend on their business transactions in another currencies, but वो किस पर डिपेंड करता है कि प्रिवेलिंग फॉरवर्ड रेट्स क्या है और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है? So this is a diagram of triangular currency arbitrage where customer buys dollar with euro provided to the local bank. Then major banks interbank market is there. Similarly, this customer buys dollar with euros to stockbrokers, then IMF PSE, then stockbroker, then here also the customer buys euro with dollar, then that goes to the stockbrokers. Then this can come from the local bank.
This is the circular triangular, you can say the currency arbitrage through which this can be done. Okay, so this is all about your this foreign exchange market, spot and forward. Spot market, you can see foreign exchange rates of a particular of different countries with particular currencies. So you can go through from this table. Then we have your direct quotations and indirect quotations. What is direct quotation? And direct exchange rate quote gives the home currency price of a certain quantity of a foreign currency quoted. That is so usually 100 units, but only 1 unit in case of US dollar or pound sterling. एक एग्जांपल अगर हम देखें जैसे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन स्विस, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड इन यूरोज इन जर्मनी. ठीक है, सो अगर हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में आपकी करेंसी क्या है, स्विस फ्रांस, एंड जर्मनी में यूरोज है. सो अगर हम इन स्विट्जरलैंड द यूरो माइट बी कोटेड एज CHF 1.5. ठीक है, सो द whereas जर्मनी में वो कितना कोटेड होगा, 0.67. सो दिस इज द डायरेक्ट कोटेशन. इनडायरेक्ट कोटेशन क्या है? इनडायरेक्ट कोटेशन, suppose for example 1 pound equals to $1.2750. So इसमें क्या है कि this indirect quotation is also used in the US for domestic purposes and for the Canadian dollar. In the foreign exchange activities, US banks adhere to the European method of direct quotations. So in indirect quotations, you are usually using the euros per dollar. Let's take an example. Suppose the pound sterling is quoted as $1.841. This quote means that banks are willing to buy pounds at $1.8419 and sell them at 1.8428. मतलब अब हम जब बोलते हैं कि ये quote किया गया है, ठीक है, this is a bid price or this is quoted, the pound sterling is quoted in this range. तो दिस रेंज का मतलब जो फर्स्ट वाला है, इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक है ये विलिंग है इतने अमाउंट में, जो पहला वाला जिसमें लिखा होता है उस अमाउंट में बाई करने के लिए और दूसरे अमाउंट में वो सेल करने के लिए. ठीक है, सो इफ you are a customer of a bank, you can expect to sell pounds to the bank at a bid rate of 1.8419 and buy pounds at the second one. अगर आप कस्टमर है तो आप सेल कर सकते हैं at 1.849 और बाय कर सकते हैं 28 वाले में. ठीक है, this last digit signifies thing. उसका ये जो 28 है मतलब 1.8428 instead of 19. Last two digits has been changed. Numericals might come from your transaction cost, that is your bid ask spread. What is the formula of that? It is the formula is ask price minus bid price upon ask price into 100. For example, अगर pound sterling है वो quote किया गया है at $1.8419 to 28, the percentage spread equals to कितना हो जाएगा? Ask price कितना था? That is the starting one, 0.8419 minus bid price. Bid कितना किया है? That is the last one, or divided by ask price. So this is the percentage spread. Then we have your cross rates. Cross rates are basically because most currencies are quoted against the dollar, it may be necessary to work out the cross rates for currencies other than the dollar. So सब डॉलर में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार we have to convert the currencies into another currencies apart from dollar. Suppose for example, if the euro is selling at $1.47 and buying rate of Swiss francs is $0.98, then अगर हम देखें यूरो पर CHF, that is your Swiss francs, तो वो कितना हो जा रहा है? 1 euro equals to 1.5 CHF. ठीक है, so this is a complicated cross rate calculation. So इस तरीके से हम अपने cross rates calculate कर सकते हैं. ठीक है, so cross rate of yen per won can be calculated by dividing the rate for the yen by rate by won.
Suppose there is a Japanese yen is quoted as 1.05.62 per US dollar and South Korean won is quoted as won 1040.89 per US dollar. तो अगर मुझे जापानीज येन टू कंपेयर विद क्रॉस कोरियन वॉन करना है, मुझे क्रॉस रेट्स करना है, तो हाउ आई कैन डू बाय जापानीज येन अपॉन क्रॉस डॉलर अपॉन कोरियन वॉन अपॉन यूएस डॉलर. So US dollar कट जाएगा, तो this is the main thing, that is 105.62 yen divided by 1040.89 won. ठीक है, simple. This is the cross rates. This is how it is quoted. The key currency cross rates Friday November 30, 2018. ऐसे हर डे का आपका की करेंसी क्रॉस रेट्स भी आता है. So you can understand that अगर यूएस डॉलर को मुझे कन्वर्ट करना तो कितने यूरो में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, कितने जीपीवाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जापानीज येन में कितना, सीएचएफ में कितना, कैड में, कनेडियन डॉलर में कितना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कितना, हांगकांग डॉलर में. तो इस तरीके से हर एक कंट्री के साथ क्रॉस रेट्स यहाँ पर दिया हुआ है. ऐसे हर डे का इस तरीके से शोकेस होता है. Here are some more examples of calculating the direct quote for Brazilian real in Bangkok. This is you can solve with simple. आपके जो formulas है, quit rate for Thai baht divided by ask rate of Brazilian real. Yes. Now coming to the currency arbitrage, which is one of the important topics. जिससे आपके numericals भी आते हैं, currency arbitrage. So what is that? What is currency arbitrage? Historically, the pervasive practice among bank dealers was to quote all currencies against the US dollar when trading among themselves. Now, however, a growing percentage of currency trades does not involve the dollar. For example, Swiss banks may quote the euro against the Swiss francs and German banks may quote pound sterling in terms of euros. So अभी हमने देखा कि पहले क्या होता था, यूएस डॉलर के हिसाब से हम सारे करेंसीज को कोट करते थे, बट अभी ऐसा नहीं होता, अभी हम क्रॉस रेट्स देखते हैं. ठीक है. So the exchange traders are continuously alert to the possibility of taking advantage through currency arbitrage transactions of exchange rate inconsistency in different money centers. So these transactions involve buying a currency in one market and selling it another. अभी हमने देखा arbitrageurs कौन होते हैं, जो risk free profit earn करना चाहते हैं एक करेंसी से दूसरे करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस है उसकी प्रॉफिट का एक एडवांटेज लेना चाहते हैं. ठीक है. So such activities tend to keep exchange rates uniform in various markets. So currency arbitrage transactions explain why such profitable opportunities are fleeting. Coming to the main numerical. Suppose the pound sterling is bid at $1.9422 in New York and the euro is offered as $1.4925 in Frankfurt. न्यूयॉर्क में डॉलर का प्राइस अलग है पाउंड स्टर्लिंग का, और यूरो और फ्रैंकफर्ट में अलग ऑफर किया गया है यूरो. ठीक है. So at the same time, London banks are offering pound sterling at 1.2998 euro, and a astute trader would sell the dollars for euros in Frankfurt, use of euros to acquire pound sterling in London and sell the pounds in New York. तो अगर हम देखें, अगर हम क्रॉस इस तीनों का करें कि एक पाउंड स्टर्लिंग इक्वल्स टू $1.9, 1 euro equals to $1.4 and 1 pound sterling equals to $1.29, तो हम देख सकते हैं कि there is a fluctuations. और अगर एक ट्रेडर आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो डॉलर को सेल करेगा फ्रैंकफर्ट में और यूरो को यूज करके पॉन्ड स्टर्लिंग को लंदन में सेल करेगा और एक्वायर करेगा पॉन्ड स्टर्लिंग को और सेल करेगा देन न्यूयॉर्क. ठीक है. So specifically, if trader begins in New York with 1 million, he could acquire 6,70,000 euros for 1 million in Frankfurt. And this is how you can do the triangular currency arbitrage. Basically, triangular
करेंसी आर्बिट्रेज क्या है? जब तीन कंट्रीज में अगर हम ये देख पा रहे कोई फ्लक्चुएशंस ऐसा आ रहा है जिससे तीन कंट्री में करेंसीज फ्लक्चुएशन हो पा रहे हैं, एक कंट्री की करेंसी को मैं बाय करके दूसरी कंट्री में सेल करके फिर उस कंट्री का जो करेंसी है वो तीसरी कंट्री में मैं सेल कर सकती हूँ, इस तरीके से देयर कैन बी अ ट्रायंगुलर करेंसी आर्बिट्रेज। ठीक है, तो इसमें सिंपली कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रॉस रेट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर किया था, क्रॉस रेट्स को हमने आइडेंटिफाई किया और क्रॉस रेट से हम उससे एडवांटेजेस रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, you can see in this diagram स्टार्ट कहां से हुआ, 10 लाख डॉलर से, देन उस 10 लाख डॉलर्स को उन्होंने फ्रैंकफर्ट में सेल किया फॉर 1 यूरो इक्वल्स टू 1.49 डॉलर, जो कि आपका 6,70,000 यूरोस बन गया। उसको डिवाइड किया हमने 1.49 डॉलर पर यूरो से और उसको हमने फ्रैंकफर्ट में जाके सेल कर दिया। ठीक है, यूरोस को हमने लंदन में जाके सेल कर दिया, फिर हमने उसको रीसेल किया पाउंड स्टर्लिंग को एंड उसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो स्टार्टिंग हमने किया था फ्रॉम 10 lakhs, नाउ एट द एंड इन द सेम day, in the same minute seconds, the 10 lakh converted into 10,01,159. So there is an advantage of 1,159 rupees in just a seconds. ठीक है, of 1,159 dollars profit आपको, right? So this is an example of triangular currency arbitrage. Then forward market, yes, we have studied कि forward market क्या होते हैं, उनके participants कौन कौन होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, forward quotation भी similar kind of thing है। Forward quotations, this is the formula of forward quotation, how you are calculating the forward premium or discount, that is forward rate upon minus spot rate upon spot rate multiplied by 360 upon contract number of days. So अगर example अगर लेते हैं हम कि November example is here, yeah, on November 30, this is what is the question? Yes, यहाँ पर फॉरवर्ड रेट हमारा था, फॉरवर्ड रेट था हमारा 1.026 और हमारा स्पॉट रेट था 1.0020। ठीक है, सो फॉरवर्ड प्रीमियम हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ डेज। सो कॉन्ट्रैक्ट कितने डेज का है यहाँ पर, 180 डेज का, यू कैन सी हियर 180 फॉरवर्ड स्विस फ्रैंक्स। ठीक है, तो 180 डेज का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये आपका इस तरीके से आप फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस एग्जांपल there is a contract of 180 forward days and your forward rate was 1.0206 and spot rate was 1.0020 and this is how you calculate, that is 3.71%। और यही अगर 90 डे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो जाता, मतलब आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ डेज है वो 90 में रिड्यूस हो जाता, देन इट विल बी ऑफ डिवाइड बाय 90, डिनोमिनेटर में 90 हो जाता, देन इट इज 1.91%। ठीक है, जब हम 90 डे पाउंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में इट इज गिवन हियर 90 डे फॉरवर्ड ब्रिटिश पाउंड सोल्ड एट 61 पॉइंट प्रीमियम, तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड रेट 1.2811 है और स्पॉट रेट है 1.2750। Similarly, we can calculate a cross rates. So this is how you can do this currency arbitrage. Currency arbitrage के जो questions है इस टाइप के आ सकते हैं आपको। One of the doubt I came in
from you. That is your currency arbitrage. So currency arbitrage can be like this. इस type के questions हो सकते हैं that following are the exchange rates and interest rate quotes. So arbitrage opportunity आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर 90-day interest rates दिया हुआ है. Spot rates are there. 90-day forward rates are there. So you have to understand. You have to calculate the arbitrage opportunity is there. So यहाँ पर आपके पास दो alternatives है. या तो आप borrow कर सकते हैं yen for 90 days. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं येन को पाउंड्स में एट स्पॉट आस्क रेट एंड फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पाउंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अनदर 90 डेज एंड फिर जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्रोसीड्स आएगा उसको आप फॉरवर्ड बिट रेट पर सेल कर सकते हैं. ठीक है, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम सारे न्यूमेरिकल्स तो हम कर नहीं सकते. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. फिर इफ द टाइम परसिस्ट देन वी विल डू अनदर न्यूमेरिकल ऑन दिस. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज. व्हाट इज दैट कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज? बेसिकली इट इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जो कि आपको yes, what is this covered interest rate arbitrage? Basically it is a financial strategy जहां पर आप इंटरेस्ट रेट, दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस को के एडवांटेजेस को रीप आउट कर रहे हो, उसको इसके लिए आप वो अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, so covered interest rate arbitrage is a financial strategy that seeks to exploit differences in interest rates between two countries while simultaneously hedging against exchange rate risk. The goal is to profit from discrepancy in interest rates and exchange rates by borrowing and lending in different currencies. So आप क्या कर रहे हो कि दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट में डिस्क्रिपेंसीज है और एक्सचेंज रेट्स को मद्देनजर रखते हुए by using the forward contracts आप borrowing and lending कर रहे हो डिफरेंट करेंसीज में. किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिस्क्रिपेंसीज. कि डिस्क्रिपेंसीज क्या है, दो कंट्रीज के दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स किस तरीके से डिफरेंट है वो आपको पता होना चाहिए. That is what is there in this. ठीक है, so covered interest rate arbitrage relies on the principle of interest rate parity, which states that difference in interest rates between two countries should equal the difference in their exchange rates. If there is a derivation from this parity, then arbitrage opportunity may arise. तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी है वो क्या बोलता है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट्स है वो का जो डिफरेंस है वो दो कंट्री का सेम होना चाहिए टू द डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट्स. दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी. अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं है तो इसका मतलब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज. देन नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कोई डिस्क्रिपेंसीज है कि नहीं, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं. तो फॉर दैट हाउ यू कैन एग्जीक्यूट? तो execute covered interest rate arbitrage and investor typically follows these steps. पहले वो borrow करते हैं करेंसी को with lower interest rate. जो करेंसी lower interest rate है उसको borrow करती है, then उसको convert करती है करेंसी with a higher interest rate, then high yielding assets में convert करती है and उसको hedge करती है with the forward contracts of to mitigate that exchange rate risk. Then the profit is being generated by this execution. And then in the meanwhile, they have to consider the risk and consideration. What kind of risk? Interest rate volatility risk, that there can be unexpected central bank policy decisions. There can be changes in market expectations. There can be interest rate volatility. There can be exchange rate risk. There can be regulatory and legal risk. There can be transaction risk like borrowing costs, conversion fees, hedging costs, trading commissions. So these kind of risks you have to consider while you are doing in covered interest rate आर्बिट्रेज. ठीक है, तो इसमें हमने चार स्टेप्स देखे. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डिस्क्रिपेंसीज कहां पर है. सेकेंडली आपको एग्जीक्यूट करना है. किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे? आप लोअर इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी से बोरो करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे हाई इंटरेस्ट रेट वाले करेंसी में
उसके बाद उससे आपको हाई यील्ड एसेट्स मिलेंगे और फिर आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप हेजिंग कर सकते हो फॉर with the help of forward contracts की exchange rate risk को आप किस तरीके से mitigate कर सकते हो. Then the profit of the difference between these interest earned on high yielding assets and interest paid on borrowed funds, ये आपका profit generation हो गया. और जब आप ये तीनों steps कर रहे हो उस टाइम पर आपको risk को consider करना है. What kind of risk? It can be related to exchange rate risk, it can be related to interest rate volatility, it can be related to transaction cost, it can be related to regulatory and legal risk. This you have to understand. ठीक है, example देखते हैं. For example, foreign exchange rates are based on interest rate differentials between two countries. Suppose we are assuming there is currency X and currency Y, which are trading at interest rate parity. मतलब उनके बीच का जो exchange rate difference है और interest rate difference है, वो दोनों ही equal है. That is, X is equal to Y. ठीक है? While the 1 year interest rate for X is 2% and that for Y is 4%. 1 year forward rate for this currency pair is therefore X equal to 1.01961. मतलब हम इतना समझते हैं कि 1.04 divided by 1.02 is the difference between the forward rate and spot rate, which is also known as swap points. So that is your 196. So in general, a currency with lower interest rate with a trade at forward premium to a currency with a higher interest rate. So हमने जैसे example में देखा कि though there was an interest rate parity in the spot market, but 1 year forward market, each unit of X fetches 1.0196 Y. ठीक है? And covered interest rate arbitrage इस केस में possible इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो cost of hedging है, suppose we are assuming that it is less than the interest rate differential. So अगर swap points required to buy X in forward market for 1 year from now is only 125 rather than 196, जो 196 हमारा आया था, तो we can determine the interest rate differentials, and that is your X equal to 1.0125 Y. ठीक है? So 1 year forward rate हमारा कितना हो गया? 1.0125 Y. I guess that is understandable, right? Now moving to our last topic of Unit 1, that is your contemporary issues in international financial market. What are the contemporary issues? The first one is relating to sustainability and ESG investing. ESG is your environmental, social and governance considerations. ठीक है? International financial management में आपको ये पता होना चाहिए what is ESG, what is environmental, social and governance considerations. How the companies are under pressure to disclose this ESG. They should disclose what are the environmental things, social things, governance, and related risk and performance metrics, how they can integrate sustainability into their business strategies, how they can align their goals with the SDG goals. So this kind of contemporary issues are coming, and how the businesses are tackling that, how they are incorporating in their international financial management, that is also very crucial. Then we have your digital transformation and fintech innovation. So rapid advancements in financial technology, including blockchain, artificial intelligence, machine learning, digital currencies, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये सारी को आपको incorporate करना है ताकि आप एक revolutionary payment systems बना सके, cross border transactions कर सके, risk management कर सके, financial inclusion कर सके, cyber security risk को mitigate कर सके. So these are another contemporary issues. Then we have your regulatory reforms and compliance challenges. We have seen Basel 1, Basel 2, Basel 3. This type of standards you have to follow. We have also studied in the class about the international financial reporting standards. Those standards, IFS, your anti-money laundering, regulatory reforms, your general data protection regulations. These you have to compile. अगर इसको आप compile नहीं करेंगे, आपको heavy tax burdens देने पड़ेंगे, आपको penalties देने पड़ेंगे, and as a result, आपने जो international financial management का framework setup किया था, वो सब खराब हो जाएगा. So this is one of the major important contemporary issues that you should be carefully scrutinize or take a look while you are deciding your international financial management. Then obviously there are geopolitical uncertainty and trade tensions, issues such as Brexit, US-China trade tensions, sanctions regimes, geopolitical conflicts. ये सब challenges pose करते हैं सिर्फ उन दोनों countries के बीच में नहीं, all over the world. Cross-border trade, investment, currency risk management, in everywhere these have a direct or indirect impact. So इसको भी आपको contemporary issues को consider करना पड़ेगा. Then we have climate change and transitions to a low carbon economy. Just like I have said in the
first point, that is your sustainability and ESG investing, that is environmental, social and governance. So इसमें ये एक major point है, that is your climate finance, your climate change, transition to a low carbon economy. ये सारे जो new terms आ रहे हैं, बहुत सारे आपके research हो रहे हैं on ESG, climate finance, low carbon economy. So these contemporary issues, what we are aligning the finance with the environment, that you have to understand. How even in the extreme bad weathers, even in extreme climate change related risk, in extreme policy changes, how we can mitigate that challenges for the international financial management. How the investors, regulators, businesses are recognizing these financial implications of the climate change. जैसे दिल्ली में हमारा कुछ साल एक दो साल पहले बहुत ज्यादा pollution हो गया था, उसकी वजह से for 2-3 months the companies were shut down, the factories were shut down. So उसका एक direct implications उनके financials पर पड़ता है. So that is what we are saying कि it's the contemporary issues where you have to understand the climate change and transitions to a low carbon economy. So you have to assess the climate related risk. You have to disclose the climate related financial informations, ESGs and etc. Then again we have another contemporary issues, that is debt sustainability and sovereign risk. So public and private debt increasingly increase हो रहा है. से एक concern आ रहा है कि there can be a debt sustainability and sovereign risk. So ये fiscal challenges किस तरीके से mitigate कर सकते हो, किस तरीके से credit worthiness को carefully assess कर सकते हो, that is also coming under the contemporary issues. I guess that is clear to all of you. So this is all about your unit 1. Now coming to unit 2, that is your cross-border investment relations. What is cross-border? Basically, आप कितना net inflows of investment करते हैं to acquire a lasting management interest. To acquire a lasting management interest, you should have at least 10% or more of voting rights in an enterprise operating in an economy other than that of the investors. So आप जिस कंपनी में है, उस कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में 10% of voting rights आप ले रहे हैं in the forms of equity, that is coming under your cross-border investment. That is the net inflows of investment to acquire a lasting management interest. So investing in a company incorporated under the laws of another country, either in individual capacity by buying shares or debentures, or in the capacity of a company by way of mergers and acquisitions, or forming a new company or taking over an existing company, etc. coming under this cross-border investments. So cross-border investment means आपका क्या आ रहा है कि अगर आप individual है, तो individual capacity में आप buying आप shares को purchase कर रहे हैं, debentures को purchase कर रहे हैं, इतना जिससे कि आपको एक substantial share आए, substantial management interest है, that is more than 10% of the stock. और as a company, आप in the way of merger, acquisition, joint ventures या new company form करके या takeovers करके आप एक cross border investment कर सकते हैं. ठीक है? Then we have two types of cross-border investments: inward investment, outward investment. Inward investments मतलब जो आपकी country में आ रहा है, that is an external or foreign entity enter either investing in or purchasing the goods or local economy. Outward investments मतलब आप दूसरे country में आप expand करें अपने expansions को by the way of greenfield investments, brownfield investments, mergers, acquisitions, joint ventures, और आप अपने existing foreign facility को expand करें, तब भी वो outward investment में आ रहा है. ठीक है? Not going in detail with the inward and outward investment. I am very much sure that you all are aware of this. Then giving an example, and SEBI investor could therefore exploit this arbitrage opportunity as follows. Just a second. So you can refer to your SL study material.
Yes, there's a topic of greenfield investment and cross-border mergers and acquisitions. So, what is greenfield investments? So, when business decide to expand their operations to another country, so there can be a different variety of dilemmas. Yeah, कि वो किस mode से enter करे, किस cross border forms of entry करे, whether they want to go with a merger, whether they want to go for acquisition, what kind of things they can do. So they can opt for greenfield investments or brownfield investments. Greenfield investment is basically कि एक ये type of FDI है, foreign direct investment, जहां पर parent company builds its operation in non-home country from the ground up. मतलब आप एक new country में जाकर आप एक नए से ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, that is the greenfield investment. So this is favorable in situation where businesses can gain local government related benefits like starting up from scratch in a new countries, like they can provide subsidies, tax breaks, they can promote their goods in the local that host country. So greenfield investments आप कर सकते हो for the cross border investments. Then brownfield investments. Brownfield investments are those investments other than your FDI, that is your mergers, acquisitions, joint ventures, strategic alliances. That is your brownfield investments. ठीक है? So depending upon कि आपकी complexity क्या है, आपके advantages क्या है, risk क्या है, आपके operations को कौन successful बना सकता है, कौन hinder कर सकता है, that is your in that way you can scrutiny, you can understand कि आपको कौन सा mode of entry आपको choose करना है for cross border investment. Coming to the next topic, that is your principles of cash flow estimation. कैसे आप cash flow estimation करते हैं? The first is through the incremental cash flows. The incremental cash flows क्या होता है वो कि आपने कैसा investment decisions लिया. It is the consequences of your investment decisions. So basically what it represents the change in firm's cash flows that occurs as a result of accepting a project. So आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C. तो आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया, प्रोजेक्ट A, तो उससे आपके एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन में कितना इंक्रीमेंट आया, that is what is incremental cash flows. So basically they represent the change in firm's cash flows that occurs as a result of accepting a project. ठीक है? So basically what is the incremental cash flows? It is the difference between cash flows of a firm with and without a project. अगर मैं प्रोजेक्ट A को चूज करती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और अगर मैं चूज ही नहीं कर रही हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा. अगर B को चूज कर रही हूँ प्रोजेक्ट B को तो कितना होगा प्रॉफिट या कितना कैश फ्लोस होंगे, और अगर चूज नहीं करती तो कितना नहीं. So this is what is incremental cash flows. ठीक है? So basically it is a consequence of an investment decisions. Then another point you have to understand for principle of cash flow estimation is the opportunity cost. Opportunity cost is the next best alternative for good. मतलब अगर आप प्रोजेक्ट A को चूज करें तो प्रोजेक्ट B का opportunity cost क्या है, आपने उसको छोड़ा है, प्रोजेक्ट B जो आपका नेक्स्ट बेस्ट था उसको छोड़ने का आपको कितना क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने लॉस किया है. ठीक है? सो सपोज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ लैंड इज 1 million. ठीक है? 1 million इंडियन रुपीस, और ये हम 1.5 million में सेल कर सकते हैं. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? 1 million फॉर 1.5. ठीक है? Then we have your sunk cost. Sunk cost कौन सा cost होता है? Sunk cost are the costs that are incurred as a result of earlier decisions that cannot be changed or reversed now with the investment decisions under considerations. Sunk cost वो cost होते हैं जो कि already आपने decisions ले लिया है, लेकिन उस decision की वजह से आपके financials पर एक major impact पड़ रहा है, और वो decision ऐसा decision है जो कि ना आप change कर सकते हो ना reverse कर सकते हो pertaining to your investment decisions. ठीक है? Then your changes in net working capital. Net working capital आपको पता है क्या होता है? Net working capital your current liabilities minus current assets. So तो जो आपकी net working liability है उसमें कितने changes आ रहे हैं by choosing a particular project, that is estimation of your current cash flows. Then separation of investment and financial decisions. आपको ये understanding ये होनी चाहिए कि आपकी investment decisions क्या है और financing decisions क्या है. Both are not same.
both are different aspects of financial management. So a project may be financed with both equity and debt capital. Debt involves payment of interest, which is a cash outflow, but such cash outflow should not be added to another cash outflows of project because interest charges relate to financing rather than investment decisions. So आप जब debt ले रहे हो तो वो एक investment decision नहीं है, वो financing decision है. If the interest payments are charged against the cash inflows of the project, it would amount to double counting since the discounting process incorporates the interest charges. So you have to know, you have to understand when you are doing the accounts that when you are doing the financial management that these two decisions are separate. Investment decisions are separate and financing decisions are separate. Because if you are considering both as the same, then it can have a double counting effect. Then replacement decisions कि एक चीज एक कॉस्ट एक एसेट को हम रिप्लेस करें, एक प्रोजेक्ट को रिप्लेस करें तो उसको कितना हमें कॉस्ट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है. What kind of additional cash flows we have to put in, or what are the additional cash flows are coming, and what outflows we have to give. Then apart from that, there are non-cash elements like your depreciations. Then tax effects are also there. So these are the cash flows. Then next is how you can project evaluate and techniques and decisions. Coming to this valuation techniques, including adjusted present value method. Yes. So then we have the techniques and decisions, how we can evaluate a project. You have already done in financial management. Now we are done in the form of international financial management. तो internationally मेरे पास अगर दो projects है तो मैं किस तरीके से evaluate कर सकती हूँ कि कौन सा project मेरे लिए beneficial है, किसमें मुझे ज़्यादा cash flows होंगे, ठीक है. So we can use different capital budgeting methods. We have payback period, we have NPV, we have internal rate of return IRR, we have adjusted IRR, we have PI. These are various methods you have already studied in your financial management undergraduation, जहाँ पर आपने ये सारे widely used capital budgeting techniques किया है. Basically, what is capital budgeting? It is a continuous process which involves the selection and implementation of projects that maximize the value of the firm. आपको एक कैपिटल बजट डिसीजंस लेना होता है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, इंप्लीमेंट कर रही हूँ, तो उससे मेरे वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है. सो एमपीवी का फॉर्मूला क्या है? एमपीवी इज इक्वल टू सीएफटी अपॉन 1 प्लस के टू द पावर ऑफ टी. दिस इज अ एमपीवी मॉडल. देन टर्मिनल कैश फ्लो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? द फॉर्मूला इज सीएफटी समेशन ऑफ सीएफटी अपॉन 1 प्लस के टू द पावर ऑफ टी plus TV n upon 1 plus k to the power of n minus I0. Where I0 is your initial investment in project, K is your expected cost of capital, CFAT is your expected net cash flows after taxes in period T. तो period T यहाँ पर 1, तो T जितना period के लिए n number of periods के लिए आप इस तरीके से calculate कर सकते हैं. Then we can calculate also your after tax cash flows associated with the project. एक आफ्टर कैश टैक्स कैश फ्लोस क्या हो सकते हैं? दैट इज योर सीएफटी टी इक्वल्स टू आरटी माइनस ओसी माइनस डीटी माइनस आईएन इनटू 1 minus t, that is the tax component, minus tt dividend component, plus 1 upon I upon t it into 1 minus t. ये आपकी एमपीवी के अकॉर्डिंग हुआ. अगर हम इसको नेट ऑपरेटिंग इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहे एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम अगर इग्नोर करें तो दिस विल बी द फॉर्मूला, दैट इज सीएफटी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू expected sales revenue in period T minus expected operating cost in period T multiply by 1 minus tax rate plus your depreciation tax sheet for the period T. So this is how you can calculate your net operating income. And the formula for NPV can be this, depending upon if it is given the cost of capital is there in the question. Agar cost of capital question mein diya hua hai, then it can be calculated as summation of RT minus OC into 1 minus T, that is tax upon 1 plus cost of capital plus TD T
अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस टीवी अपॉन 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, माइनस आई. KD is your after tax cost of debt, E is amount of equity in capital structure and D is amount of debt. This all you have done. So यहाँ पर हम ये बात करें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अगर दो प्रोजेक्ट है, सपोज एक प्रोजेक्ट है जो यूएस में है और एक प्रोजेक्ट है जो जापान में है, तो दोनों प्रोजेक्ट की स्ट्रीम ऑफ नेट कैश फ्लोज क्या है, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ नेट एनपीवी. ठीक है. Then we have your appraisal from project's perspective. प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी हम कितना अप्रेज्ड हुआ है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. This is how we can done. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि कितना अप्रेजल हुआ है, फ्रॉम द पैरेंट कंपनी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द सब्सिडी कंपनी पर्सपेक्टिव. ठीक है. पैरेंट कंपनी के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू एस्टिमेट कि जो फॉरेन करेंसी में हमारा कैश फ्लो कितना आ रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है. उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट क्या है उस एक्सचेंज का, ये हमें पता करना पड़ेगा. थर्डली वी हैव टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज टू डोमेस्टिक करेंसी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पर जो हमने स्पॉट रेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उस पर हम करेंसी कन्वर्ट करेंगे. एंड फोर्थ वी हैव टू आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक डिस्काउंट रेट एंड फाइंड द एनपीवी इन डोमेस्टिक करेंसी. तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, E multiply by CFT, that is CFT, that is your expected cash flows in domestic currency at time t upon 1 plus I to the power of t. So पहले approach is used for appraisal of projects perspective and second approach is used for appraisal for parent company's perspective. तो ये हमने जो किया ये पैरेंट कंपनी के पर्सपेक्टिव से किया कि पैरेंट कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर मुझे ये देखना है कि कितना अप्रेजल हुआ है from the particular project from a particular foreign company, so for these steps I have to calculate these things. तो इसके लिए मैं इस तरीके से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकती हूँ. But if I want to understand, I want to know how the project's perspective के according मेरा appraisal हुआ है, मेरे company cash flow appraisal हुआ है, then what are the steps? Then first you have to estimate the cash flows of the project in foreign currency. Then second you have to identify the foreign currency discount rate. थर्ड यू हैव टू एनपीवी को फाइंड करना है फॉरेन करेंसी में और इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपीवी इक्वल्स टू समेशन ऑफ E मल्टीप्लाई बाय CF. CF इज योर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी एट टाइम t. कितना कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस I टू द पावर ऑफ F टू द होल पावर ऑफ t. ठीक है. दैट इज फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट क्या है, F टू द पावर ऑफ t इज योर I टू द पावर ऑफ F इज द foreign currency discount rate. So 1 plus your foreign currency discount rate to the power of t, that is your time. कितने टाइम के लिए आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है, that is NPV. We have to understand the appraisal of project's perspective. Then we have another technique for this decision making is adjusted present value model. So basically NPV model क्या कर रहा है, वो आपके जो कैश फ्लोज है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको डिस्काउंटिंग कर रहा है. ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लोज एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हिच मेजर्स द रिस्क एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड. कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया कितने टाइम पीरियड के लिए है और क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी हमने एनपीवी में देखा. The conventional NPV model also implies that project has the same business risk, both financial risk and operating risk, as that of MNC as a whole. So further, it is assumed that debt equity ratio remains unchanged over the life of period. So बहुत सारे you can say there are many drawbacks of NPV, but अगर हम एक adjusted model निकाले तो that is known as your adjusted present value model. So basically ये जो ABP है ये क्या consider करता है? This is considering that a project will have different discount rates in its evaluation process. तो दो प्रोजेक्ट्स है, दो अलग कंट्री में है, अलग जगह पे है, तो दोनों के डिस्काउंट रेट्स अलग होंगे, जो कि एनपीवी नहीं बोलता है. एनपीवी क्या बोलता है कि दोनों बिजनेस के रिस्क सेम होंगे, फाइनेंशियल रिस्क हो या ऑपरेटिंग रिस्क हो, दोनों के सेम होंगे इन केस ऑफ एनपीवी मॉडल. लेकिन एपीवी मॉडल क्या बोल रहा है कि दोनों के रिस्क अलग हो सकते हैं, दोनों के ऑपरेटिंग रिस्क अलग हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क अलग हो सकते हैं, दोनों के इसीलिए डिस्काउंट रेट्स भी डिफरेंट होंगे व्हेन वी आर doing the evaluation process. ठीक है. So depending on the type and quantum of risk involved in the project, we can calculate
whether we have to do with the NPV calculation या फिर हम APV मेथड को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, अगर हेवी रिस्क है, हेवी फाइनेंशियल रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है, तो APV मॉडल को यूज कर सकते हैं. और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट बोथ फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क आर सेम इन द MNC एज अ होल, तो वहां पर हम NPV मॉडल को यूज कर सकते हैं फॉर द कैपिटल बजटिंग. जो APV मॉडल है वो आपके मोडिगिलियानी मिलन वैल्यूएशन मॉडल पर डिपेंड करता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडल? यू हैव वेल अवेयर ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग इफेक्ट्स. So as evident from the equation, the value of levered firm is the sum of the value of unlevered firm. Levered firm क्या होता है? Value of unlevered firm plus value of financing effects. Yeah. So हम ये बोल सकते हैं कि NPV of a project has two components, all equity NPV and the value of financing effects, which includes interest tax shields. तो NPV में आपके all equity NPV हो सकता है या फिर जिसमें interest tax shields भी include. Right. So formula of APV model is this. That is your summation of RT minus OC to the power to T for the time being and multiply by 1 minus T, that is the tax rate, upon 1 plus KU to the power of T plus summation of TD upon 1 plus I to the power of T plus TI upon 1 plus I to the power of T plus TV upon 1 plus KU, that is cost of capital of unlevered minus 1 upon C. Okay. So the tax saving due to depreciation, that is your TD, and tax saving due to interest, that is TI, are discounted at the rate of I by assuming that these cash flows are relatively less risky. हम APV मॉडल में क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जहां पर बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क डिफरेंट है, यहाँ पर हम APV मॉडल लगा रहे हैं. तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर द टैक्स सेविंग्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन TD और जो टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट TI, वो डिस्काउंट हो सकते हैं किस रेट पर? एट रेट ऑफ I. क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर? अज्यूमिंग दैट दीस कैश फ्लोज आर रिलेटिवली रिस्कलेस. The all equity cost of capital is the required rate of return of the particular project, which includes the risk-free rate of return and risk premium. So all equity cost of capital है, वहां पर क्या इंक्लूड हो रहा है? रिस्क-फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. This is how you can calculate the annual interest tax shield. That is your KD, cost of debt multiplied by T. So the change of P equals to change of P is your TD multiplied by GPV, right? This is how you can calculate the annual interest tax shield. For example, if pre-tax cost of debt is 10% and tax rate is 35%, and change in P is 60 million rupees, then the interest tax shield क्या हो जाएगा आपका? interest tax shield हमारा फॉर्मूला दिया था KD कितना है? 10%, that is 0.1 multiply by T, हमारा टैक्स कितना है? 35%, मल्टीप्लाई बाय आपका चेंज इन बी. चेंज इन बी कितना है? वो 60 मिलियन. सो इससे हम प्री टैक्स, इससे हम एनुअल इंटरेस्ट टैक्स शीट पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. हम क्यों बोल रहे हैं कि एपीवी मॉडल इज बेटर देन द कन्वेंशनल एनपीवी मॉडल? क्योंकि यहाँ पर हम सेपरेटली दोनों चीजों को ले रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग इफेक्ट्स ऑन द प्रोजेक्ट. Next, the topic is risk in cross-border decisions. What are the risk in cross-border investment decisions? Very simple, political risk होगा आपके, political risk related to your volatile political systems, poor economic conditions, restrictions in foreign investments. There can be fluctuations in political decision making. There can be
political events like which can accelerate the level, which can force MNCs to liquidate their project. So there can be multiple number of political risks which you can should have carefully scrutinized while doing the cross-border investment relations. Apart from that, there can be currency risk. हमने देखा आपके exchange rate volatile है तो foreign exchange rates को आप किस तरीके से forward contracts के through उसको आप mitigate कर सकते हो, risk को mitigate कर सकते हो. So this kind of risk can be also there. Then you have foreign exchange risk, the currency risk. This all we have talked about from the last 2 hours. इसके अलावा inflation risk is there. Inflation risk for this inflation, you already know that. So revenues different time period में increase हो सकते हैं, decrease हो सकते हैं due to the inflation and inflation. So कुछ चीजें हमारे accounts में, हमारे financial records में कुछ चीजें cost sensitive होती है, which are sensitive towards the inflation, and कुछ नहीं होती है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से मिटिगेट कर पा रहे हैं ये इन्फ्लेशन रिस्क को. In other words, you can say that if you have more funds that have tied up with the working capital component, especially inventories and receivables, then there might be an increase of capital requirement in the inflation period, right? So inflation period में capital funds का requirement ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने सारे funds को अपने working capital components के साथ tie up कर दिया है कि आपके पास आपके reserves में आपने कम रखा है, ठीक है? So in inflationary period, the net cash flows of a project are expected to increase at an inflation rate. So obviously आपने working capital आपका जो है वो तो inflation rate पर ही increase होगा. So such cash flows are known as nominal cash flows, and real cash flows are the nominal cash flows adjusted for inflation. तो nominal cash flows कौन से हैं जो कि inflation के साथ increase हो रहा है, और real cash flows कौन से हैं जो कि inflation को consider करके उसको adjust किया जा रहा है. Inflation adjusted nominal cash flows are your real cash flows. Generally, the market cost of capital includes the inflation premium as well. When the nominal cash flows are discounted by a nominal rate of return, the real cash flows are discounted by real rate of return. The nominal NPV is identical to real NPV of a project. So these are the risks you have to consider. What are those? Political risk, currency risk, foreign exchange risk, inflation risk, and इसको आप किस तरीके से mitigate कर सकते हो, handle कर सकते हो. You can use the risk-adjusted discount rate approach, right? जहाँ पर आप the cash flows of higher risk projects are discounted at a higher cost of capital, and cash flows of lower risk projects are discounted at a rate below the company's average cost of capital. ठीक है? तो अगर हायर रिस्क प्रोजेक्ट्स है तो उसको आप हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर सकते हैं, एंड अगर लो रिस्क प्रोजेक्ट्स है तो उसको आप कंपनी के एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बिलो द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल द कंपनी. So this is how you can use your risk adjusted discount rate approach. So it involves using different discount rates on different projects depending on the risk involved. So हर projects के उसमें कितना risk involved है इसके according हम उसके discount rates को क्वेश्चन अप करते हैं. The certainty equivalent approach, another way you can mitigate the risk associated with cross-border investments, that is your certainty equivalent approach. So under this certainty equivalent approach, the investor first evaluates the risk associated with the cash flow and specifies how much money with certainty would make him or her different between risk-free and risky cash flows. तो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कैश फ्लो मेरा रिस्की है और कौन सा रिस्क फ्री कैश फ्लोस है, ठीक है. Then they identify a certainty equivalent coefficient. वो क्या होता है? Basically, it is a ratio of amount of money that someone would require with a certainty in order to make him or her indifferent between that certain amount and an amount expected to receive with a risk is computed. तो ये जो certainty equivalent coefficient है ये basically 0 to 1 के बीच में ही होता है, and it has an inverse relation with risk. अगर risk ज्यादा है तो certainty equivalent ratio coefficient आपका कम होगा, अगर risk कम है तो आपका certainty equivalent ratio आपका ज्यादा होगा, ठीक है. तो एक inverse relationship है certainty equivalent ratio का आपके risk के साथ, ठीक है, and it lies between 0 to 1. कितना आप रिस्क अवर्शन है उस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने डिफरेंट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट हो सकते हैं. दैट will lie between 0 to 1.
So in जो ये जो रिस्क इक्विवेलेंट कोफिशिएंट रेशियो है हमारा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे कैश फ्लो को, जिससे हमें पता चलता है कि विच इज द रिस्कियर कैश फ्लोज एंड विच इज द लोअर रिस्कियर कैश फ्लोज. ठीक है. सो द riskier the cash flows, the lower their certainty equivalent values. Then we have your sensitivity analysis. The cash flows of a project are influenced by several factors. For example, sales revenue of a project is influenced by demand of a product or services of the product. So sensitivity analysis में हम basically ये टेक्निक है जहां पर ये हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा एनपीवी में नेट प्रेजेंट वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है एज कम्पेयर और आईआरआर में कितना चेंज हो रहा है. एक अगर पर्टिकुलर वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, if a particular variable is changing, so how much impact it is giving in the net present value and how much impact it is giving into IRR. Okay. So for example, variable like depreciation, percentage of depreciation has been changed. ठीक है, तो उससे एनपीवी में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड आईआरआर में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड उस चेंज से हमारा कितना जो एनपीवी का रेंज है वो फॉल हो रहा है या फिर राइज हो रहा है, क्या वो नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है. दिस विल बेसिकली गिव यू अप द आइडिया ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस. So Monte Carlo simulation can also be used in this context. एक और way से हम risk mitigate कर सकते हैं, that is your Monte Carlo simulation. A computer model can be used to choose a random value of each for the variables that influence the NPV of a project. So a random value can be assigned to NPV of a project. These values are selected for each variable with its probability distribution is used along with the fixed values of other variables. So एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको सिलेक्ट किया जाता है एंड उसको अदर वैल्यूएबल्स के साथ इसको यूज किया जाए सो दैट टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी, कितना एनपीवी है और कितना उससे पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्यूट हो सकता है एंड वो कितना रेंज पर आ रहा है. ये एक अनदर वे है, टेक्निक है, दैट इज नोन एज योर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टू नो व्हाट इज द टू अंडरस्टैंड और टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट. Then we have other like scenario analysis, decision-tree approaches. ठीक है, what is scenario analysis? Scenario analysis जहाँ पर हम तीन scenarios देखते हैं. Pessimistic scenario है, optimistic scenario है या average scenario है. These can be defined with a certain probabilities. ठीक है, अगर कोई certain project है, suppose वो pessimistic scenario में हो रहा है तो मतलब 0.40, तो probability क्या है 0.35 और probability of average scenario क्या होगा 0.25. तो अगर वो probability ज्यादा है कैश फ्लोस की, रिस्क भी कम है, तो वो पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक उससे थोड़ा कम और एवरेज सिनेरियो बीच में. तो ये एक इन ईच सिनेरियो वैल्यूज ऑफ की वेरिएबल्स आर एस्टिमेटेड एंड उसको उसके रेस्पेक्टिव एनपीवी के साथ कंप्यूट किया जाता है. तो दिस इज अ सिनेरियो एनालिसिस वेयर थ्री सिनेरियोस आर क्रिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी एंड देन उसको रेस्पेक्टिव एनपीवी के साथ कंप्यूट किया जाता है. ठीक है. देन वी हैव योर decision tree approach. Decision tree approach is an approach graphic representation of relationship between presentations and future durations along with their consequences. तो इसको भी हम certain probabilities से identify करते हैं कि sequential relation जो हम ले रहे हैं एक graphical representation के through हम इसको ये decision tree approach हम use करते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि presentation and future duration से उसके क्या consequences हो सकते हैं. ठीक है. This is all you have already done in operations management. So वहाँ से आप you can get the idea. And how you can mitigate the political risk. Political risk can be identify. आपको पहले से देखना है, रिसर्च करना है कि वहां पर कोई वायलेंस होता है कि नहीं, क्या चांसेस है. What can be economic risk can be there. Takeover risk क्या हो सकता है कि maybe the government might deregulate the norms, might do the nationalizations. So इस type की ownership या stake में अगर changes आ सकते हैं, there can be a possibility. So you have to go through that. So unstable political transactions can lead to this takeover risk. Then protest risk can be also there. So you have to do a country risk analysis. Different types of country risk can be there. Souvenir risk, neighborhood risk, political risk, subjective risk, economic risk. So in exchange risk, transfer risk. So risk के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया. So इन सारे risk को आपको carefully scrutinize करना है. So that आपकी जो international financial management है, आपके financials पर impact सबसे कम से कम mitigate कर सकते हैं. Okay. So let's keep it till here. In the next class, next session, which will be starting from 5:30 onwards,
नो 6 o'clock ऑनवर्ड, सो 5:30 सीधे और कैलेंडर। तो वहां पर हम फिर आगे का नेक्स्ट 2 यूनिट्स हम करेंगे। वी हैव completed unit 1 and unit 2. In the next 2 units, we will start with working capital management, managing currency risk and interest rate, and international diversification and portfolio investment. ठीक है। इसमें चैट इनेबल नहीं हो पाया इसमें। नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक श्योर कि चैट इनेबल हो सके इसमें। सर चैट इनेबल क्यों नहीं है? चैट रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है जी मैम, बंद करें, एंड कर रहे हो अभी बढ़ाओगे? एंड कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट्स ले। ओके जी, ओके।